फिर पटारी से भी कॉल आ गई, फिर 91 से भी कॉल आई। उन्होंने क्या फीड पिक्चर्स मांगी उन्होंने? पटारी वालों ने वह मैं था चुप। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया फिर आपने क्यों छोड़ा? आई नो समीना पीर ज़्यादा बन गया हूँ मैं, तो क्यों आपने मुल्क प्यार के नहीं होता है? एथिक्स शहजाद, एथिक्स इज नो एथिक्स, जस्ट बी ऑनेस्ट। क्या जाता है आपका? हमारे यहाँ इखलाकियात नहीं है और अपनों की कदर नहीं है। एंड आई 96 वालों ने मैं नहीं कहा, ऐसे कुछ नहीं है। Surround yourself with people who are better than you in terms of character, in terms of speech. And they're like, हो क्या रहा है इस कमरे में? Close your eyes. YouTube पे आए, हम कपड़े उतार चुके हैं। जल्दी जाओ। You sexy little thing. Good morning. Welcome to FM 89, the breakfast show. You do it so well. 91 हो गया अब तो 91 हो गया। 2+2 हो चुके हैं। मिस्टर खालिद मलिक, लोगों की सुबहें आपने बगैर की बहुत ज्यादा, आज हमारे साथ आ चुके हैं। कैसे हैं सर? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बल्कि शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया कि I thought this is very sweet and generous of you. Thank you. I love it here. Thank you very much for having me. Thank you so much for coming. मैं आपको याद करता रहता हूँ, हमारी तो ऑन एंड ऑफ गुफ्तगू होती रहती है। आपने बड़ा मेरा ईगो तोड़ा था एक दफा, आपको पता नहीं होगा कब। मुझे पाकिस्तान में लगता था कि मैं मेरे से अच्छा एमसी तो नहीं होगा, फिर मैंने आपको देखा एंड आई वाज लाइक खालिद ये वो तो खालिद द बेटर होस्ट। इस्लामाबाद में आपने बहुत अच्छा किया था वो जो क्या व्हाट इज इट कॉल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो? Yeah, that's right. You did such a good. That's right. I remember I think शायद पहली मुलाकात वो थी शायद, या नहीं? आई थिंक हम एक दफा साद हारून के घर पे मिले थे। ओके। आप आए हुए थे ना वो जब इम्प्रोव का हम ट्रूप बनाने की कोशिश कर रहे थे many years ago. बिल्कुल Then you stabbed साद. No, मैं डर गया। I stabbed him. साद, come on, I didn't do anything buddy. चले वहीं से शुरू करते। हम सब रोए कि खालिद मलिक अब हमारे साथ सुबह नहीं होंगे। हम सब, फिर हमें पता चला अच्छा नहीं, बस थोड़ा सा नॉब घुमा दें वापस खालिद। What was the story? Were you actually leaving the morning show gig and then got an opportunity, or did you know कि अच्छा मैं सिर्फ 89 छोड़ रहा हूँ लेकिन 91 पे मैं आऊँगा? मुझे याद है कि जब मैंने 91 ज्वाइन कर दिया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सारा एक स्टंट था और ये प्री प्लान था। प्री प्लान तो वैसे कुछ नहीं था। आई थिंक मुझे 10 साल के बाद, क्योंकि 89 के साथ 10 साल मेरा वास्ता रहा है, एंड आई हैड अ गुड टाइम, कोई शक नहीं। लेकिन आई थिंक एक वक्त आता है जहाँ आपको लगता है कि यार आई थिंक अब टाइम हो गया है, एंड आई नीडेड अ ब्रेक आल्सो फ्रॉम रेडियो 10 years एवरी मॉर्निंग। और मुझे लग रहा था कि कहीं ना मेरी क्रिएटिविटी शायद अब वो fizzle out कह ले, या it just wasn't bubbling as it was. So I think maybe I just need some time. तो वो बड़े मुश्किलों से अपने आप को राजी किया, फिर कंपनी को राजी किया, और फिर मैं भी रोया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोया। मुझे याद है उस शो के बाद it was a very heavy morning for me because I was crying on air, और मैं बड़ा जज्बाती बंदा हूँ, तो मैं अगर रोम कॉम भी देख लूँ ना तो मैं उस पर भी आंसू टपक रहे होते हैं। सो मैं घर गया, मैंने कहा मैं अब सोऊंगा, तो मैंने फ़ोन ऑफ किया, मैं सो गया। मगरिब से पहले मुझे याद, मैं उठा हूँ, मैंने फ़ोन ऑन किया, मैंने कहा क्या हो गया शहर में, लो मैसेज आ रहे हैं। एंड देन आई इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मेरी हरगिज ये तवक्को नहीं थी कि भाई ये इस किस्म का रिस्पॉन्स होगा। मैं तो ये समझ रहा था कि लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। लेकिन फिर जितने भी पैसिव लिसनर्स थे जो सुनते थे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, माई इनबॉक्स शहजाद वाज फुल। और ऐसे स्टोरीज जिनको पढ़ने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार रेडियो की ये ताकत है, रेडियो ये कर सकता है। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में रेडियो को ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा, रेडियो को नहीं। हालांकि रेडियो टेलीविज़न से ताकतवर चीज़ है, ताकतवर मीडियम है। हमारे एडवर्टाइजर्स को ये बात समझ में नहीं आती,
और हमारे जो कुछ ओनर्स हैं उनको बात समझ में नहीं आती कि रेडियो का सही इस्तेमाल. देखिए दुनिया में देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, ह्यूज ऑन रेडियो, ह्यूज money being pumped into radio. The US, money being pumped into radio. Europe, money being pumped in. यहाँ पर money is being drawn out of radio. तो खैर वो बात हो गई. फिर एक आध बल्कि एक आध नहीं 2-3 हफ्ते के बाद ब्रांड से कॉल आ गई, एक ब्रांड कि हम अपना एक शो शुरू करना, प्लेटफॉर्म शुरू करना, हम चाह रहे कि आप वो होस्ट करें. फिर पटारी से भी कॉल आ गई, फिर 91 से भी कॉल आई. उन्होंने क्या फीड पिक्चर्स मांगी उन्होंने? पटारी वालों ने वह मैं था चुप. उन्होंने आवाज मांगी थी. आवाज सानू दे दियो. You went to audition and they're like नीचे कैमरा So you know, and I just sort of, and I'm a very family oriented man, so I discussed it with the family. So you do it. So I took some time out also. But yes, then in the pipeline, in the back, sort of this was in the works also. Tahir Khan made you an offer you couldn't refuse. Kind of. I had certain conditions, and you know, Sara Tahir Khan, who's the CEO, was generous enough, and she said sure. And so you know, you kind of just move on, and so that's kind of what happened. But it wasn't easy. You know, and they're good people, I think. Yeah. उनकी wife है, उनकी बेटी है. They have a good या head पता on है their शेहजाद, अगर shoulders. आप अच्छे हैं ना तो मेरा ये, शायद मुझे नाइव भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे आपको. ये बिल्कुल ही डाइवर्जेंट सवाल है, लेकिन how do you have a process, because people that you work with, they're always happy to work with you. Usually लोग जिनके साथ काम करते हैं उनको गालियां देते हैं. आपके साथ जिन लोगों ने काम किया है वो तारीफें कर रहे होते हैं. So शुक्र है. Do you actively consciously think before stepping into a room कि आप गाड़ी में अच्छा मैंने अब पॉजिटिव होके जाना है? नहीं, एक्चुअली आई टेल यू व्हाट इट इज. आई थिंक जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं या जो आपसे बात कर रहे हैं, शायद वो बड़े अच्छे लोगों की ऐसा एक ग्रुप है ऐसे लोग हैं जो आपको जो समझते हैं कि भाई ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसके अंदर तो एटीट्यूड ही एटीट्यूड है. हालांकि शायद ज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैं, इट टेक्स टाइम फॉर मी टू काइंड ऑफ वार्म अप टू अ सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पर्सन. आई एम जनरली एक्चुअली एन इंट्रोवर्ट, बट मैंने जो रगड़ा खाया है ना शुरू में, आई थिंक वो मेरे लिए सबक था. बिकॉज आई डोंट फॉरगेट दैट. क्योंकि मैं मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं मीडिया से, नॉट एट ऑल. मैं वाहिद शख्स हूँ जो मेरे फैमिली में मीडिया में अंदर दाखिल हुआ है एज माई प्रोफेशन. एंड सो द रगड़ा दैट आई हैड टू गो थ्रू इन अनदर कंट्री एज एन एथनिक माइनॉरिटी ट्राइंग टू फाइंड वर्क, वो जो रगड़ा और वो जो मुझे सबक हासिल है ना, वो कभी नहीं भूल सकता. तो मैं जब भी किसी सेट के ऊपर जाता हूँ या जो भी मैं शो करता हूँ, मैं आई डोंट फील एंटाइटल्ड. हाँ, अब शायद थोड़ा हो गया कि भाई कॉफी तो लेकर आ जाएं या पानी तो, या कुर्सी दे दे यार. आज सुबह आए ना, पॉडकास्ट करते हैं, लाइक मुझे नाश्ता कराओ. मैं इनको कैफे लेकर गया, मैंने खागीना पराठे खिलाए, फिर आए. जी बिल्कुल. थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट. आपने इतने ब्रेकफास्ट शो किए, हम आपको ब्रेकफास्ट के बगैर कैसे ये कर सकते थे? इट्स इंटरेस्टिंग. मतलब ऑब्वियसली हम कम ही मिले, लेकिन मैं I would be surprised कि somebody feels like you have an attitude, you have a warmth about you. मतलब even अगर हम बैठे हुए हों, जो हम इवेंट की भी बात कर रहे थे, हम स्ट्रेंजर्स बैठे हुए थे 4-5 लोग. You were the one who initiated the conversation, started talking. 2 मिनट में बैठा, फिर मैंने साइड में देखा आप योगा कर रहे हैं नूर के साथ, नूर मसूद. तो बड़े कंफर्टेबल आदमी है. I love people, Shehzad. I do genuinely love people. मैं वो हूँ जो कैफे में बैठ के अकेले लोगों को देखता है. वो कभी नजरें हटानी पड़ती है क्योंकि कुछ ज्यादा ही देख रहा हूँ. Is that creep Khalid Malik? Why is he looking at me? Why is he staring at us? You know, टोपी भी पहनी हुई आपने, and you're like, you like to read. उसके ऊपर हुडी हो. जो नहीं है, क्या नाम है, यू वाले का. So yeah, there is a group of things I'm attitudinal. I remember I met Sana Boloch once at a wedding. पुरानी बात है. और that was the first time we actually spoke at this wedding. और बड़े फ्रेंडली तरीके से बात हो रही थी, क्या हाल है, ठीक ठाक है. फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा, मुझे तो लगता कि आपके अंदर बड़ा एटीट्यूड था, लेकिन आप तो सही हैं. मैंने कहा जी, शायद मुझे थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, शायद तो इसलिए. लेकिन हाँ, तो ये रगड़ा क्या है जिसने खोला है आपको? ये प्लीज
What ethnic minority are you? So I used to live in Australia. Australian, आपने ethnic minority. I was an ethnic minority, bro. Oh, in Australia. In Australia, I was an that ethnic makes minority. sense. I was like, आप कह रहे हैं मैं कराची में as an Australian मैंने बड़ा struggle किया है as an ethnic minority of being an Australian in Karachi. Right. No, so अब जाकर Aussie burger आए कितने साल मैंने अकेले struggle किया. Okay, that makes so sense. yeah, I mean, you know, so I worked as an extra for many years. जिनको हम पाकिस्तान में बड़े प्यार से जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा तो यू नो ऑडिशंस पे जाना चुपचाप बैठना you know, just that kind of ragda where no one gives a shit about you, and so you know that makes you learn, that gives you a lot of lessons in life. और फिर रेडियो भी मैंने किया, वहीं से शुरू किया रेडियो. तो मैं नौकरी भी करता था क्योंकि मेरा ये ख्वाब था, तो पैसे के लिए, बिल्स के लिए मैं कॉल सेंटर्स में काम करता था, टेली मार्केटिंग, डोर टू डोर सेल्स. लाइक माय बैकग्राउंड इज सेल्स. मास्टर्स के बाद मैं गॉट इनटू डोर टू डोर सेलिंग. तो वो एक रगड़ा, यू नो, रियली काइंड, जैसे कहते हैं आपने बंदे को तोड़ना है, तो वो उस किस्म का रगड़ा. फिर पाकिस्तान आया 2007, किसी को जानता नहीं था ना, मुझे कोई जानता था. तो मैं तो अपने बड़े अच्छे से एक शोरियल लेकर आया था, क्योंकि वहाँ पर तो मैंडेटरी शोरियल लेकर आया था. डीवीडी, उस ज़माने में डीवीडी होता था, प्रिंटेड डीवीडी साथ लेकर आया था. हम टीवी के पास गया, ARY के पास गया. उस ज़माने में द म्यूज़िक भी था, MTV भी था. तो शोरियल सबको दिया, लेकिन सबने शोरियल कप के नीचे रख दिया कोस्टर के तौर पे. And so to date, मुझे जो काम मिला, सिर्फ काम से काम मिला है. मैंने बड़ी कोशिश की शहजाद के पार्टीज में जाऊं, घुल जाऊं, मिल जाऊं, लेकिन it just wasn't my thing, and I just stopped. And I just decided I'll let the work speak for itself. Time लगा, but that still happens. ऑस्ट्रेलिया फिर आपने क्यों छोड़ा? आई नो समीना भी ज्यादा बन गया हूँ मैं, तो क्यों आपने मुल्क प्यार के जनरली? नो या मुझे एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे रेडियो भी कर रहा था, टेलीविजन भी कर रहा था वहाँ पर, और मैं नौकरी भी कर रहा था. आई वाज यू नो ट्राइंग टू मेक माय वे अप. तो एक दोस्त है पाकिस्तान की है, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, कि व्हाई डोंट यू ट्राई रेडियो इन पाकिस्तान, यू नो देयर इज अ कूल रेडियो स्टेशन FM 89, सो you'd really like that. Really? So I came to Pakistan, ननियाल ददियाल यहाँ पर पाकिस्तान में, ये तो हर साल, हर 2 साल के बाद वैसे ही हम आते थे. And then I did a little bit of scouting. And so I thought, you know what, let me do this. So I went back, packed my bags and this came. और जब मैं आया था पाकिस्तान, जब पता चला लोगों को ये ऑस्ट्रेलिया से आया, तो पहला सवाल, पहले तो शक की नजरों से देखते थे कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर. मैंने कहा डिपोर्ट हुए. हाँ बिल्कुल. आपने कोई शरारत की है वहां पर, आप क्यों आए? मैंने कहा मैं जेन्युइनली मैं काम के लिए आया हूँ. And I didn't come here to try. I came here to do it. मैं कोशिश करने के लिए नहीं, मैं करने के लिए आया था. So I remember calling City FM 89, Australia में free में. I remember to date, I was in my car, emergency lane on the shoulder of the freeway. I parked my car, hazards were on. I called Pakistan, City FM 89, got the number from जो website है. मैंने कहा आपका जो decision maker है, sales का background वैसे ही था, वो कौन है प्रोग्रामिंग में उस जमाने में मुनीज़े होती थी प्रोग्रामिंग में. उनसे बात की, वो भी हैरान कि ऑस्ट्रेलिया से हमें क्यों कॉल कर रहा है और यहाँ पर आना चाह रहा है, यार क्या हो गया इसको. मैं आ रहा हूँ, आई वांट टू मीट यू. मैंने MTV कॉल किया, MTV पाकिस्तान, मैं आ रहा हूँ. मैंने ARY कॉल किया. मैंने आने से पहले आई वाज ट्राइंग टू हुक अप मीटिंग्स विद एवरीवन. आई एम श्योर नो वन टुक मी सीरियसली कि आप आ जाएं फिर देख लेते हैं. So I remember on my plane ride here, I was writing possible potential shows for MTV and for ARY and so on. So, you know, that's how that transition happened. And यहाँ तक land होने तक यही हो रहा था. They were like, चलो ठीक है, कोई पागल बंदा आ रहा है, इसको काम दे ही दो, कुछ कर ही लेगा. So, you know, before 89, I was offered the breakfast show. उस जमाने में Radioactive 96 होता था. Radioactive. उन्होंने एक Imagine Dragons का गाना सुना, and they're like, ये हमारी जिंदगी की आइडेंटिटी अब यही है. Radioactive. So I was offered a job there to do their breakfast.
Their accents were even faker than 89. Sorry. I could never get the accent. 89 पे चले फिर भी genuine लोग थे. 96 में बहुत fake accent, बहुत fake accents होते थे. I couldn't handle it. So anyway, so I was offered a Geo English भी शुरू हो रहा था. So I was offered a job as a news anchor on Geo English. Now I was doing the breakfast for 96, and I was offered a job of MTV. Nice. I decided no to Geo English. वैसे खत्म हो गया Geo English. I said no then to 96. मैंने कहा I want to host on TV. I want to be a VJ. Not VJ, VJ. तो मैं VJ बनने चला गया वहाँ पर. गजनफर साहब CEO and I joined. और बड़ा जो वहाँ पर जो अनुशे, डीनो, फैजान, अली अस्करी, they're all like, ये कौन बंदा आ गया. मैंने बड़ी जिंदगी try hard. I really tried hard to fit in. Really tried hard. और जबरदस्ती फैजान कही मुझे बताना जब पार्टी हो रही है तो मुझे बताना. मुझे बताना, मैं आऊंगा फैजान. ओह ये बेचारा. अच्छा मैं बताता हूँ. आप बच गए अगर आपने फैजान के साथ पार्टी नहीं की, वरना आज आप इतने हेल्थ एंड वेलनेस नहीं होते. आखिर फैजान के साथ पार्टी कर लेते. खैर उसने शायद एक दफा बुलाया था, मैं गया भी नहीं था शायद. I don't know why. I really tried. कैफे बेसमेंट आ जाओ ब्रो. ओह कैफे बेसमेंट में था एक दवाने में. And I really tried. अब तो सारे माशाल्लाह दोस्त हैं और कभी कभी हम बात करते हैं कि हम सब सोचते हैं कौन आ गया यहाँ पर हमें बताने के लिए कि क्या करना है. So that was an interesting ride. I think they were great though. मुझे नहीं पता इंडस म्यूजिक ने किस तरह सिलेक्ट किए थे. But they really stumbled upon greatness. Anushe, Dino, Mahira Khan I think was also a VJ there. Yes, and then she joined ARG TV after that. So कुछ luck थी क्या था, but they really stumbled upon great people. I think Anusha still does a stellar job hosting all these shows. Absolutely. So then so MTV didn't work out. वो MTV खत्म हो गया ना फिर. अच्छा, सारे म्यूजिक चैनल्स खत्म हो गए. That's true. Play TV, the music, सारे बंद हो गए. So then you're like 89. हाँ 89 तो चल रहा था उस वक्त भी. When I was at MTV it started 2007 से ही शुरू हो गया था 89 का सिलसिला. हमारी जो दोस्त हैं आया उन्होंने भी ये पूछा था कि किस तरह आप सुबह सुबह इतने खुश होते हैं. बट नाउ दैट आई नो कि आपका सेल्स का बैकग्राउंड है, आई गेस दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, राइट? कॉलिंग पीपल एंड बीइंग लाइक डू यू नीड प्लम्बिंग हेल्प? कौन हु इज दिस? आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्लम्बिंग टक. हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टक. 100 कॉल्स. तो उस इतना जलील होने के बाद आई थिंक रेडियो इज प्रॉब्ली इजी. वैसे सेल्स आपको ढीठ बना देता है. बट द मॉर्निंग थिंग आई थिंक इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिकॉज सुबह सुबह के lectures and genuinely I don't know why I just liked my mornings. तो मुझे याद है हम ट्रेन पकड़ते थे सुबह, भाई और मैं. 2 घंटे का होता था सफ़र फ्रॉम हाउस टू यूनिवर्सिटी कैंपस. सुबह सुबह निकलना होता था. And I never even thought about it to be honest कि सुबह निकलना है, कभी भी नहीं. What time did you wake up? Because So lectures सारे 8 o'clock. स्कूल के रास्ते में 8 o'clock शुरू होता था. Lectures हमारे कभी 8 शुरू होता था, कभी 9. मॉर्निंग शो तो पहले नहीं शुरू होता था because I remember स्कूल के रास्ते में भी was on. अच्छा हाँ. So initially it was just 2 घंटे 8 to 10 and then it went, I think it went, if I remember it was at 8 to 11. फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 दिन दे दें क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ अलार्म मेरा रैंडमली अलार्म्स बजते हैं, पता नहीं क्यों. 1:40 पे अलार्म बजे. Remember to breathe. इसमें तो अभी अच्छा म्यूजिक बना तो वो कीड़े मकोड़े बोल. So कोई दवाई तो नहीं है. तो यूजुअली लोगों के ये होता है कि खाओ दवाई. Random alarms. So what was I saying? So then you went to 5 days a week. Yeah, 5 days a week, and hesitantly they gave me 5 days a week, and then they thought, oh, this is actually working. And then I said, देखें breakfast shows जो दुनिया में breakfast shows होते हैं वो 4 घंटे के shows होते हैं. मुझे 4 घंटे दे दें. मुझ पागल को 4 घंटे दे दें. So then we went 7 to 11, and then been doing it 7 to 11 every single day. How do you manage 4 hours alone in a booth? Sometimes it gets a little lonely, but I boring answer है लेकिन I love what I do. Genuinely love what I do. मुझे याद है शहजाद जब मैं रेडियो बहुत सुनता था जब मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था, और जब मैं अपने सकी कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जाता था रेडियो तो ऑन करता ही था. एंड आई यूज्ड टू गो, मैन आई वांट टू डू अ ब्रेकफास्ट शो वन डे. आई रियली वांट टू बी ऑन रेडियो वन डे. एंड the power of manifestation, and it just happened. But I genuinely love what I do. अब as a professional जब मैं उस नज़र से देखता हूँ फिर मुझे अफसोस होता है कि वही पहली वाली बात कि पाकिस्तान में रेडियो को तरजीह नहीं दी जाती. पाकिस्तान में रेडियो को समझा नहीं गया है.
समझते नहीं है रेडियो की ताकत. बट आई मीन अवाम को ठीक है अगर हम बुरा भला बोलें, बट रेडियो प्रोग्रामिंग भी जो करते हैं, मैं मल्टीपल टाइम्स ये भी है. डिफरेंट आइडियाज लेकर गया हूँ, एंड लाइक नहीं वो आप बैठ जाएं और आप बातें करें, फिर गाने चलाएं. हम लाइक नहीं, आप एनपीआर देखें. बिल्कुल. एनपीआर पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता. या इवन नैरेटिव बेस्ड रेडियो प्रोग्राम्स वेयर आई एम लाइक अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, देयर लाइक नहीं, गाना चलाएं फिर बात करें फिर गाना चलाएं. सो जो हमारी रेडियो प्रोग्रामिंग करते हैं, दे आल्सो डोंट थिंक बियॉन्ड दैट. You're right. And because you see they think of it as the bottom line कि यार हमें fees भी भरने हैं, हमने salaries, overhead expenses वगैरह, तो हमें पैसे तो चाहिए ना. हाँ ठीक है हम ये कर लें लेकिन हमें भी कुछ मिले. यहाँ पर advertisers फिर back out कर लेते हैं because advertisers today still think कि रेडियो का नाम सिर्फ जो गाड़ी में बैठा है बस वही रेडियो सुन. ऐसा नहीं है. रेडियो has now become very resilient, it's become very flexible, very expansive. रेडियो अब सिर्फ ये नहीं कि आप माइक पे बोलें और आप को गाड़ी में सुना जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप it's now open up to the digital realm. हम थोड़ा अगर क्रिएटिवली सोचें, अगर एडवर्टाइजर्स क्रिएटिवली सोचें, we know that content is king. Just because someone has 1 million followers doesn't mean कि वो कोई ढंग का कंटेंट पब्लिश कर रहे हो. फजूल कंटेंट होता है अक्सर. अरसलान के बारे में आपको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए वैसे. अरसलान केड़ा अरसलान? जिसके अभी हम बातें कर रहे हैं. अरसलान पता नहीं कौन अरसलान. No, but I mean, radio shows, radio channels in Pakistan are not putting out content. It's not like City FM 89 का YouTube channel है जहाँ पे वो content लगा रहे हैं. Because advertisers नहीं spend कर रहे ना. नहीं, but वो भी तो नहीं कर रहे. I mean, they expect कि advertisers आए हमारे पास, हमें सारे पैसे दें, फिर हम ये बना लेंगे. नहीं, आप बना के कुछ दिखाएं तो. I mean, for years, 89, 91 have not. I'm naming them because वो सबसे popular है. But any radio channel has not done any content that has withstood time, right? आपका भी हम एक बोल सकते हैं. अच्छा, breakfast show in general was great, but will I go back and listen to a breakfast show episode you did 27th June 2009? No, right? लोग सुनते हैं पिछली एपिसोड्स, पुरानी आर्काइवल, पुरानी साउंड क्लाउड पे. तो लोग कभी कभी मुझे मैसेजेस आते हैं, वी मिस इट, फिर मैं उनको बताता हूँ मैं यहाँ आ गया हूँ. अच्छा अभी भी आप कर रहे हैं. सो it is a little bit of a vicious cycle. जब रेडियो स्टेशंस कैसे कुछ कर सकते हैं, इतना कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते. अब हमने एक्सपेरिमेंट किया थ्रू 91 ट्रक रेडियो. The concept was and it was something that I wanted to do for a very long time. Literally on the back of a truck you sit a studio and you roam with the truck. हमने ये किया. It is an amazing idea. लेकिन brands become very short-sighted. They don't think of the potential that this has कि आप एक मोबाइल रेडियो स्टेशन तैयार है, इसके साथ आप पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जगह जगह पे पार्क कर सकते हैं. It is not only an amazing marketing concept, it is an amazing way of interacting with the audience, with the consumer, with the listener directly, physically. हम हर इंडस्ट्री में ब्रांड्स नहीं आ रहे जी. हम ब्रांड्स नहीं आएंगे तो फिल्में नहीं बनाएंगे. हम क्यों? पर ब्रांड्स 91 के पास पैसा तो है, 89 आई डोंट नो कितना पैसा है, बट 91 बिकॉज दे ओन एन एजेंसी, दे ओन वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनीज, सेम ही कंपनी है ना, तो पैसे तो हैं उनके पास. इफ इट्स सच अ ग्रेट आइडिया, डू इट एंड शो अस, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस ब्रेकफास्ट शो, यू डिड अ ग्रेट जॉब. आई एम श्योर इट वाज इजियर टू फाइंड स्पॉन्सर्स आफ्टर दैट बिकॉज यू प्रूव्ड इट. ट्रू. तो ब्रांड्स को क्यों गालियां दें यार कि आप हमें पैसे दें तो हम कुछ करेंगे, आप पैसे नहीं दे रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे. देखिए, ब्रांड्स ना भी तो हम काम तो कर ही रहे हैं. ब्रांड्स ना भी तो हम अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर ही रहे हैं. ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, हमने काम रोका हुआ, ऐसा बिल्कुल हरगिज भी नहीं है. लेकिन कोविड डिड अफेक्ट एवरीबॉडी, इट अफेक्टेड मी आल्सो, अफेक्टेड ऑल रेडियो स्टेशंस. इट वाज अ ग्रेट चांस फॉर रेडियो टू एडवर्टाइजर्स पुल्ड आउट. फीस थोपे गए रेडियो स्टेशंस के ऊपर, इतने फीस के हम शायद अफोर्ड ना कर पाए. गवर्नमेंट ने there were fees they were slapped on. Licensing fees होती हैं. So I mean, all needs to work in tandem. अगर आपने किसी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाना है और उसको फ्लरिश करने देना है, फिर आपको थोड़ा सा बैक सीट या आराम करना पड़ेगा. इसको पहले इनको फ्लरिश तो होने दें. let it go through, let it move, let it have some momentum. यानी कि momentum वो आपने रोक दिया फौरन, उस मोमेंटम को बिल्ड होने दें, then you'll see the dividends in years to come. I think लोग विजन भी नहीं है. I mean, like for instance, podcast, right? They're the buzzword. Everybody is doing it. Radio stations के पास तो edge था, उनके पास studios बने हुए हैं. They had the video camera in many studios as well. Audio equipment तो obviously उनके पास.
वो अगर 3-4 साल 5 साल पहले जब दुनिया भर में पॉडकास्ट अच्छी हो रही थी, पॉपुलर हो रही थी, had they had the vision and started those, they would have been the kings. But वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. Never too late to start, so that's what we've done too. So we've started up. NPR की तो बात कर रहे थे ना, या niche programming की तो बात कर रहे थे. We've started on my show. It's called The Green Hour, and it's literally it's about the environment. It's about how do we make this environment better. And again, you'd probably call that niche. That's you, right? They're like, अच्छा हमारे पास एक अच्छा इंसान आ गया है, आप कर लें तो कर लें. But would 91 go to a documentary filmmaker like an equivalent of Ken Burns in Pakistan and be like, आप 14 अगस्त आ रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे हमें 10 पार्ट एपिसोड्स चाहिए, ये लें 10 लाख रुपए और ये बना के दे दें? No, right? They don't do that themselves. Yeah, there's no cash sort of outflow sponsorship. If we did do and we have done things like that in the past, we did it on our own, using the talent or the pool talent that we have. And so whatever we do, and I think it's for all radio stations, but I can only speak for where I am, is that we do what we can with the resources that we have, and we really genuinely do capitalize on what we have. हम अक्सर व बेशतर कैंपेन मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और हम इनोवेटिव, मेरे ख्याल से इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बाकी को शायद ना लगे, लेकिन मुझे लगते हैं. तो हम, और मैं वैसे ही एक्सपेरिमेंट के मूड में होता हूँ, तो मैं वो वाला हूँ कि करो फिर सोचो. वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपको क्रेडिट जाता है. आई थिंक जो मालिकान है वो थोड़े रुके में 2005 में. 2005 में they are moving, but they're also kind of snail pace because they're also mindful of what is happening in the external environment. You know, वो भी देखना पड़ता है. And I can't imagine what it's like because I'm not in that position. So yeah, I mean, that's fair कि अगर एक पैमरा का नोटिस आ जाए, और let's say TV1 is making money, News1 is making money, 91 is not making money, but they're still doing it. 91 की वजह से एक नोटिस आ जाए जिससे TV1 बंद हो जाए, तो that's not a risk worth taking for them. Whereas अगर आप डिजिटल, जिस तरह मैं कंटेंट बना रहा हूँ, I don't really care कि हम क्या बात कर रहे हैं. डिजिटल पे थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा है एज अपोज टू रेडियो या टीवी. सो आई गेट दैट पर्सपेक्टिव कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस की वजह से हैं, उसकी वजह से शायद रिस्क ना लेते हो, कम रिस्क लेते हैं, क्योंकि फिर इतना एक्सपेंडिचर भी नहीं होता. उसके बावजूद पैसे लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते, लेकिन हाँ, जैसे आप कहते हैं खुल के पैसे लगाएं, जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते कोई भी रेडियो स्टेशन. शायद एक ज़माने में कोविड से पहले कर सकते थे, लेकिन things really shifted. I think पाकिस्तान में, you know, when we say things like industries, we don't really have industries. Because अगर थिएटर इंडस्ट्री है और वो ब्रांड के पैसे पे चल रही है, तो वो इंडस्ट्री तो नहीं है ना. एक फिल्म, पाकिस्तान doesn't have a film industry. Even a TV industry. क्योंकि अगर देखिए, इंडस्ट्री तब है जब स्टैंडर्डाइज्ड फीस हो. जब मैं काम करता था तो स्टैंडर्डाइज्ड फीस होते थे कि एक्स्ट्रा के जो फी वो ये है पर आवर, फीचर्ड एक्स्ट्रा का ये है, फिर एक्टर का ये है, फिर सीनियर एक्टर. देन ऑब्वियसली यू गेट टू पॉइंट वेयर you can demand a sum of money. मतलब इंडस्ट्री इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फीस. यू नो, शहजाद ने अच्छा काम कर लिया, आप किसी ने कहा कि आप हमारे ड्रामे काम, मैं भाई इतना लूँगा एक ड्रामा करने के बाद. क्यों? क्योंकि ब्रांड आ गया, ब्रांड ने किसी एड पे दे दिया, मैं इतना लूँगा. अब जो एक्टर बरसों से काम किया, सालों से काम करता आ रहा है, वो उसी 2015 वाले फीस में 2022 में वही चार्ज कर रहा है. क्योंकि you know, it's not an industry. We like to think it's an industry, but it's not. It's also standalone नहीं है ना. Like even अगर स्टैंड अप कॉमेडी जो मैं करता हूँ, अगर मैं उसकी बात करूँ, अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो जो कॉमेडी क्लब्स हैं, लोग जा रहे हैं कॉमेडी क्लब पे, कॉमेडी सेलर भरा हुआ है, स्टैंड भरा हुआ है, तो लोगों ने जाना है कॉमेडी क्लब पे. सो आप परफॉर्म करें. यहाँ पे ये है कि अच्छा, शहजाद गयास अगर शो कर रहा है तो मैं चला जाऊंगा, अकबर चौधरी अगर शो कर रहा है तो मैं चला जाऊंगा. देयर इज नॉट अ सिंगल कॉमेडी क्लब इन द कंट्री. देन वी लाइक, व्हाई आर वी नॉट प्रोड्यूसिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस? बिकॉज है ही नहीं कॉमेडी क्लब. सो इंडस्ट्री एज सच डजंट एग्जिस्ट. लाइक इवन विद सिनेमाज, अगर लोग वैसी सिनेमा जा रहे होते हैं, बिगिन अगेन देखिए आपने, इसकी मार्क रफलो की मूवी है जो अब तो सच हो गई है, बिकॉज एडम लेविन चीटिंग वाज द स्टोरी. अच्छी मूवी है. आई हैड नो आइडिया इट एग्जिस्टेड. मैं
चोरी करके वो मैंने देखी थी. सो इफ यू गो टू अ सिनेमा, इंडस्ट्री नहीं है हमारे यार, बट मैंने अमेरिकन से पैसा चुराया ना. तो जो मल्टी स्क्रीन थिएटर्स होते हैं, they only check your ticket when you enter the theater. Right. And then you're supposed to go to see your film. तो मैं गरीब स्टूडेंट था, फिर मैं जाके 3 फिल्में देख के Yeah, of course, sneak in. So Begin Again मैंने इस तरह देखी है ना. I was like, yeah, what a great movie. So वहाँ सिनेमाज एग्जिस्ट करते हैं. अगर मूवी स्पॉन्सर्ड नहीं भी है, एक छोटी मूवी भी है, it'll make some money और it'll make the money it spent back. यहाँ पर अगर कोक ने स्पॉन्सर किया है तो आप मूवी बना सकते हैं, कॉर्नेटो ने स्पॉन्सर किया है तो आप मूवी बना सकते हैं. A filmmaker can't really make money by making a movie. As a labor of love वो कर लें तो कर लें. So you can't really say we have an industry per se because the money is not there. यार एक और वजह, so I have a slightly different take on this, कि किसी इंडस्ट्री की बुनियाद अगर इखलाकियात पे ना हो, अगर एथिक्स पे ना हो, फिर it's not an industry. It'll be wobbly forever and ever. क्या इखलाकियात से हम नीचे इधर. there's no ethics, there's no कि भाई आप एक्टर को रुला रहे हैं, पैसे आपका काम हो गया, आपने पैसे रोके हुए, आपने क्यों, पता नहीं कोई वजह होगी, आप there's no ethics. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के कह दे कि अब हमारे साथ आप काम नहीं कर रहे, आपने डेट्स देने के बाद कहा नहीं अब ना आप हमारे साथ नहीं है, आपने शूट करने के बाद कहा कि भाई अब हमारे साथ आप नहीं, और आपने सिर्फ एडवांस में कोई टोकन पैसा दिया होगा. एथिक्स नहीं है हमारे पास. We lack ethics. When you lack ethics, how can you expect for an industry to flourish? It will never flourish. That's my understanding. I agree with you 100%. Please मेरे पैसे दे दें जो लोगों ने रोके हुए. दे दें. Especially media industry, तो like अगर आपकी 2 महीने में आ जाए पैसे तो they're like शुक्र करें. Yeah. आप शुक्र करें 2 महीने में पैसे आ गए. Like literally 4 महीने बाद एजेंसीज पैसे दे के they're like हमने आपके पहले प्रोसेस करवा दिए, बाकियों बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान किया आपने कि आपने मुझे ही पैसे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेके वो दे दें मुझे 4 महीने बाद. So this, you can't expect the industry to flourish because this is short term. There's no vision. कहाँ है vision? मुझे बताएं कहाँ है vision? There's no vision. And so हाँ मैं सड़ा हुआ उसमें. मुझे लग रहा है ये जो फुल रगड़े खाए थे ना उनके बदले यहाँ निकल रहे. कोई हमारे एथिक्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, और सेल्स कॉल करो तो उठाते भी नहीं. So we need to sort our ethics, get our shit together, and जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है. नहीं. ये लिटरली किसी ने मुझसे कहा, कोई ड्रामा था मेरा, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट से, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में छोड़े ना कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, कैसी इंडस्ट्री बना रहे हैं. So as an outsider, आप रेडियो शो करते थे, फिर just because you were doing a radio show people gave you acting gigs, or were you actively trying for acting gigs? No, I was actively trying. And my first ad was, I think, Dalda. Chef Rahat, do you remember Chef Rahat? नहीं. अभी भी है शायद, पता नहीं. So वहाँ से फिर काम मिला, किसी और ने देखा. Then I did I think किसी ad से मुझे किसी ने देखा, वो there was a sitcom, वहाँ पे कास्ट किया, फिर किसी ने वो देखा, फिर कास्ट किया. That's how it kind of happened for me. And this is recent, नहीं? No, since 2008. अच्छा. हाँ, लेकिन ये कि recently कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है that became popular, so people like, oh अच्छा आप ड्रामा भी करते हैं. मैंने कहा करता आया हूँ. शुक्रिया. ऑस्ट्रेलिया से करता आ रहा हूँ मैं, आया ही पाकिस्तान में इसी काम के लिए. पर आपने पढ़ा क्या? आप कह रहे थे आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे थे. Sorry, my BSc in science, majored in anatomy and physiology, and then I did my masters of business. And then you do a radio. And I was doing a diploma in acting साथ साथ. अच्छा. तो वही पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, पाकिस्तान में if you go some place and you're like मेरे पास है, like ये तो छोड़ देना, कुछ भी इसका नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. किसके पास ट्रेनिंग है एक्टिंग की मुझे बताएं, किसी के पास नहीं है. No one gives a shit कि आप क्या ट्रेन लेकर आए. बस आप गोरा है, अच्छी शक्ल है आपकी, आ जाए हीरो बनाते हैं. नाम नहीं लेते, कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट सिंस आपने पढ़ा हुआ है एंड मेरा खुद ये ग्राइप होता है, don't you agree that the acting mostly in dramas and films in Pakistan is atrocious? Yeah, because there's no seriousness to it. ना, they come, उनको पता कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे दिहाड़ी गुजारनी है, कर लूँगा मैं, इतना थोड़ा मैं लाइंस ले लूँगा, कर लूँगा मैं, कोई ऐसी बात नहीं. गिने चुने हैं कुछ एक्टर्स जो इसको संजीदगी से काम करते हैं. But yeah, by and large, that's my feel. I agree with you because I think आपके लिए एक्टिंग में सबसे जरूरी चीज होती है कैरेक्टर.
Yeah. एंड हमारे जो फेमस एक्टर्स भी हैं उन्होंने फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं. अच्छा क्या करना है इस सीन में, रोना है. लाइक रोना इज वन थिंग. वो हर जहाँ उन्होंने रोना है वो वही करना होगा. इस किस वजह से इस सीन में रोया जा रहा है, उसके क्या इम्पेटस है वो मैटर नहीं करता. देव मेड दीज सांचाज इन देयर हेड, गुस्सा, रोना, खुश होना, एंड दे थिंक दैट इज ऑल दैट एक्टिंग इज. एंड देन दे जस्ट take it to 100 in every single scene and people are like यार वाह 6 expression दे दिए 6 सेकंड में. And somehow we think that is acting. ऐसा ही है. And maybe sometimes I feel like you know I shouldn't have taken acting that seriously. गलत जगह उस passion के साथ, क्योंकि I got into acting because I loved acting. I didn't want to become an actor for the fame and the money. Yes, that was a byproduct. FYI, acting से मैंने आज तक पैसे नहीं बनाए. Thank you very much. लेकिन रेडियो में ज्यादा पैसे बनाए. अब आपको इतने फोन आएंगे. आप तो मुफ्त में ही करते हैं ना. हमें तो पता चला आप तो चक्कर है. आ जाए ना, बस आ जाए ना. आ जाए. आ जाता हूँ. ठीक है. So you know, और एक और लाइन है कि सुनिए, एक तो हम कर रहे हैं अभी सीरियल, पहला है हमारा है सीरियल. उसके बाद जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप मांगेंगे हम आपको देंगे. ये जिस इंडस्ट्री में जो इंसान है ना, उसको आज मैं एडवाइस दे दूं, इस ट्रिक के लिए कभी नहीं फॉल करना. एवरीबडी आई नो हैज फॉलन फॉर दिस. ये लंबा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम अभी, 10 शोज करेंगे, एक कर लेते हैं इस पर. फिर वो फिर कभी नहीं आता. वो फिर कभी नहीं आता. इवन विद एजेंसीज, अब्दुल्ला, आई एम श्योर यू फेस दिस. पहला प्रोजेक्ट है ये. फिर अभी ये जब इसको रिटेनर पे कर देंगे ना, कभी जिंदगी में नहीं होता ये. एथिक्स शहजाद, एथिक्स इज नो एथिक्स. जस्ट बी ऑनेस्ट. क्या जाता है आपका काम नहीं होगा ना. Just be honest with what you want, and you know, things will shift. हम करते नहीं है. So I think that's also why, because शायद इसलिए मुझे कम काम मिलता है. किसी ने मुझे इनबॉक्स किया उस दिन कि आप कम ड्रामा में क्यों कमा रहे हैं, क्या हो गया. आप सिलेक्टिव काम करते हैं. दिल तो जाके मेरे को, हाँ मैं बड़ा सिलेक्टिव काम करता हूँ. But I said to her, कोई कास्ट नहीं करता. And I think she thought it was a joke because she messaged back with a ha ha ha. I said नहीं, it's true. कोई कास्ट नहीं करता. आप थिएटर क्यों नहीं किया आपने कभी? I've done theater with Sania Said. Nice. It was a TCF theater festival, Katha company. It was an adaptation. It was a farce. It was comedy. Mohabbat bhi, Qiyamat bhi. It was directed by Shahid Shafat, Sania Said, Rehan Sheikh, brilliant actor, Salim Miraj, brilliant actor. You know, who act for the love of acting. ये जो लोग हैं. I'm glad Salim Miraj is finally getting recognition. Amazing. हीरा बंदा है. And then you know Adnan Shah Tipu भाई बहुत, you know, passion. They genuinely love doing it. They've come into the industry because मुझे actor बनना है. टीपू भाई की मुझे भी बात अच्छी लगती है कि वो कश्तियां जला कर आए थे. कि मैंने बस ये करना है. That single mindedness often gets you places. I think once अगर आप 6 कश्तियों में हो ना, फिर मुश्किल भी हो जाता है. लेकिन काश हम कदर करते. पता है मुझे, पता नहीं, शिकायत है इंडस्ट्री से. जेडेड लोग हैं आप. सुबह सब आपसे ये सवाल पूछ रहे थे कि इतने खुश कैसे होते हैं. नहीं, अब ये बात कर रहे हैं आज आप. या तो मैं ऐसा हूँ कि मेरे से जो बात करते हैं डिप्रेस ही हो, खुलने का मौका मिल रहा है ना. अपने डिप्रेशन में सबको ले आता हूँ. अपनों की कदर नहीं करते. हम अपनों को जो अब्दुल्ला ये बातें जो है ना, कौन फाया कौन म्यूजिक पीछे लगा कर टिश्यू का डब्बा कहाँ है? हम अपनों की कदर, मन के तेरे ये भरम कच्चे. ये बहुत हिट टिकटॉक है. एक वाइड डायरेक्टर जो मुझे कास्ट करते हैं जी, फारूक रेंद. वो वाइड डायरेक्टर है पाकिस्तान में, जो अगर आपको देखेंगे ना शहजाद, अगर अब्दुल्ला आपको देखता है ना कभी कि शहजाद आप ना सिर्फ ये, मुझे जब देखते थे आप ना बाहर का आया हुआ बंदा है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, अमीर घराने से. जब फारूक रेंद साहब देखते हैं तो वो बागी का कैरेक्टर देखते हैं, वो देखते हैं वडेरे का कैरेक्टर देखते हैं, वो देखते हैं कि पुलिस का तुम रोल अदा कर सकते हो. That's vision bro. वो माय डायरेक्टर पाकिस्तान के जो मुझे कास्ट भी करते हैं. और साहब अगर देख रहे हैं तो मेरे अंदर आपको जो नजर आ रहा है प्लीज. So you know, आपने हमारे टिकटॉक तो कंप्लीट नहीं किया. मुझे जो कितनी जोर से आ रहा था कि मैंने काट दिया. sorry. वो जो अपनों की कदर करते हैं वो पूरा बोले ना, ताकि हम उसको काट के वायरल करें. हाँ, अपनों की हम कदर नहीं करते.
आगे नहीं है इसके आगे लाइन थी, अपनों की तो कदर नहीं करते हम। यही लाइन थी। पाकिस्तान का मसला बताऊं क्या है? पाकिस्तान का अपने जो है ना वो ही नहीं पसंद आते हमें। हमारे यहाँ इखलाकियात नहीं है और अपनों की कदर नहीं है। मन के तेरे ये एक कमेडियन है मीर ज़ोहैर, उनका एक बहुत अच्छा इसी तरह का जोक है कि वो रंगरेज़ा लगा देते हैं हर चीज़ के पीछे उसको वायरल करने के लिए। सो मॉर्निंग आप कैसे, लाइक आई मीन सिंस यू आर अ डीप थिंकर, हाउ डू यू लाइक, यू आर सेइंग वो नेचुरली हो जाता था, यू डिडंट नीड टू पुट अप एन एक्ट for the morning show? Yeah. No, not at all. That was you every morning. Every single morning, the content What was did mine. you mix in the coffee? Yeah, just chai actually every morning. But you know. So genuinely you were happy. That happy. Oh, genuinely happy. और बल्कि अगर कोई परेशानी थी भी तो जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल होता, माइक ऑन होता, मिक्सर ऑन होता, I forgot. शो खत्म, स्टूडियो से बाहर, ओ तेरी I think I don't have much money in my account right now. बिल कैसे पे करूँगा? It's that actor thing कि oh now I'm playing Khalid Malik. It wasn't a character. You see, so I tell people that अगर रेडियो की अगर हम बात करते हैं, अगर आप फेक हैं, अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हैं, अगर आप वाकई में for the love of नहीं कर रहे, you will get caught out eventually. You will filter out eventually. But Khalid, it's not about being fake, right? For instance, जब मैं स्टेज पे कॉमेडी करता हूँ वो मैं नहीं हूँ। सही कह रहे हैं। वो मैं बट वो जो बात कर रहा है that's honest and it's coming from that place. But अगर मेरी माँ बीमार है और मुझे टेंशन है और मैंने परफॉर्म करना है, मैं परफॉर्मेंस में वो नहीं लेकर आऊँगा जहन में कि आई एम थिंकिंग अबाउट होम। That'll be that happy everybody having fun. Yeah. So it's not fake, but I'm very conscious कि वो एक character है. But it's an honest character. There have been many times when I've come in the studio food poisoned, and I 96 वालों ने मैंने नहीं कहा, ऐसे कुछ नहीं है. And you know, I'd be like, I'd do my legs. Airways media से आज नाश्ता है. I'd do my legs, go on the sofa and लेट जाता था. You know, and लोग कहते हैं take a day off. I said no, I'm still going. So I don't know what it is, but you see, एक individual के मुख्तलिफ parts होते हैं. मैं एक बाप भी हूँ, शौहर भी हूँ, रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ. अब जाहिर सी बात है, आरजे घर पे तो नहीं आरजे ना, घर पे तो एक बाप हूँ, एक शौहर हूँ. So you do have different roles that you play, and you just need to know when you kind of interweave all of these roles into the situation that God has presented in front of you. You know, so that's how I look at it. Do people also do this to you? Because as a comedian, मुझे इतना गुस्सा आता है. I walked out of a date the other day because she was like, "Oh, joke sunao," and I'm like, oh my God. I mean, in this place, I'm a person having a conversation. Yeah. I mean, if I'm funny, that's fine. Jokes. She But said मैं that? हाँ, and I was like, अच्छा What? ठीक है. And I said, तुम Why तो did you offend say हो that? गए हो. तो आपके साथ भी होते हैं that people expect even in a social setting, oh, Khalid's coming, so you'll be like, अच्छा चल यहाँ entertainment आ गई है. बहुत दफा. I remember एक shoot के बाद मैं कैफे में बैठा हुआ था. I was dead exhausted. अकेला बैठा हुआ था, कॉफी पी रहा था, रात का वक्त था. कुछ लड़के आए, कुछ लोग आए अंदर, and they saw me sitting. I said, Assalamu alaikum. Well, we thought you were like, you know, loud. I'm like, well, I'm kind of tired also, and I'm really exhausted, so I'm not loud right now. And it'd be a little weird if I was loud throughout the day. So yeah, people expect that, you know, and they get surprised that I'm an introvert. रात के 3 बजे अरे खालिद बैठा हुआ है. Good night, I'm Khalid Malik. But ऐसा नहीं है, I'm human, and so I have my emotions too. ये आपको स्केच बनाना चाहिए, being Khalid Malik all day. All day. Oh my God, that'd be Sir, ये exhausting. आपका पिज्जा. Thank you so much for your pizza. Good night with Khalid Malik, and your tip is 100 rupees. We should do that. He's like पागल का बच्चा. Wait, exactly. लोग पागल ही समझेंगे. Of course. So you know, I have my days, I have my moments, but I'm very when I'm in work mode, I'm very focused. And when I'm at home, I'm very focused. So yeah, people do have that. Draining है because sometimes like if I do a comedy show and people are like हाँ तूने घंटे ही तो perform किया, you have 12 hours free to party, and I'm like नहीं, that hour takes the energy that I have stored. Sure.
So do you also feel like a radio show चले 4 घंटे तो obviously draining ही होगा, but do you feel like वो, you know, you're sitting on a chair? My energy goes down after that. It goes into a slump, and then it takes time for me to sort of just, you know, bring the energy back. तो दोपहर का जो एक नींद, I love that. It's not just physical, right? I'm sure it's also mental. It is mental. How but, do you recover from that? So over the number of years, I've you know, developed my own ways of helping myself get through stuff. So I take the aid of that. Or if you don't mind, like, is it some breathing? Is it some what is it? So for the longest time I've been a meditator. So meditation भी है, और लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई फॉर्मूला होगा जो ये पीता है. जब आप कहना कि मेडिटेट करें या नमाजें पढ़ें या ये करें, हैं, चलो ठीक है, होगा. So that's I've always had a spiritual inclination from high school. और एक दीनी inclination. वो बीच में कहीं चला गया था. But I always knew that जब फैजान के साथ थे उन घंटों के लिए गायब हो गया. फैजान हीरा बंदा है. मैं on record मैं बताना चाह रहा हूँ. He's a very good man. And so yeah, I respect them all. But so yeah, that's Fazan, these are jokes. I'm a comedian. Don't mind these things. But yeah, so you know, met a lot of good people on the way, and yeah. Do you feel like you also need to be alone for a few hours after the radio show? Sometimes I do. बहुत ज़रूरी है. लेकिन वो कम मौका मिलता है. You know, and so my wife and I we try and you know, allow for that space to sort of take place, that environment to take place. जहाँ पर, you know, अगर मुझे सोना हो तो आप सो जाएं, बच्चों को मैं थोड़ा distract करती हूँ. Because I'm a very hands-on father. And the same with her, you know, if she needs time out, we know that needs to happen also. Just to regulate ourselves. Yeah. That's super healthy. I mean, the place where I'm coming from with these questions is कि ज़्यादा too much information हो जाएगी. But you know, sometimes when people do Molly, they're like, बहुत downer होता है. I'm like, downer क्या होता है? And then I realized कि doing comedy and shows, वो naturally मुझे हर दफ़ा होता रहता है. So I'm so used to that feeling that you go on such a high. And then you're performing and there are 200 people and they're laughing. And then you come home. So वो इतना मेरा natural हो गया था. Peak होता है ना. वो पर जितना peak होता है वो उतना ही नीचे आता है. Dopamine and you know, all the good stuff on the adrenaline peaks and then it has to come down. But it doesn't come back down to normal. It goes down all the way जितना ऊपर गया था. But I was so used to that when it's induced, I'm just like, ये तो normal चीज़ है. And you're like, पागल तो नहीं है. So I've always struggled to, you know, maintain that baseline and normal and somehow smoothly come back. It's always like peak, crash, peak. And I feel I'm coming to a point where I'm like, this is unhealthy and I need to figure out a way to just थोड़ा normal रहूं. Peak भी ज़्यादा ना हो और नीचे भी ज़्यादा ना जाए. Breathing, I do a lot of breathing. Mostly breathing exercises to help regulate myself and to shut my mind off. So that definitely helps. और I think routine का होना बड़ा ज़रूरी है. खास तौर पे जो morning routine है वो बहुत ज़रूरी है. It really sets you up for the rest of the day. और अगर कोई challenges आते भी हैं, आप उतना react नहीं करेंगे शायद अगर routine के बगैर आप react करते हैं. You still react, लेकिन वो उतना intensive नहीं होगा, intense नहीं होगा. I'm sure age also helps. If we Google Khalid Malik, apparently I'm 70. 70. यही मैंने भी देखा. 70 or something. I was like, he looks really good for 70. Yeah, not bad, huh? I don't know. I've never bothered. बेचने के लिए बहुत अच्छा है. आप बोले कि देखिए 70 साल में मुझे देखें. Meditation, yoga and healthy habits. That's what happens. How to look like Khalid Malik at 70. I think ये बहुत बिकेगा. बहुत बिकेगा. Thank you for that revenue stream. But ये 70, I was like, ठीक है यार. लोग कहते हैं कि change कर रहे हैं. एक तो मुझे पता नहीं कैसे change करना है. दूसरा I can't be bothered changing it. But yeah, not 70. I'm sure, but like experience and age थोड़ा वो balance out कर देता है. And then realizing that that's also something to crave for. These highs and lows is not a healthy way to live. No, it's not. And I think as entertainers, as actors, you know, हम masks चढ़ाने में बड़े माहिर हैं. There's a reason that you wanted to become a comedian. There's a reason that I wanted to be an actor. और ये पुरानी बात है.
You know, for me, it was wanting attention, wanting to be adored. Acting does that. Public space does that. But when that is drawn away from you, you're lonely. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स जो कहते हैं मुझसे एक हाई होता है, then we come on a low and really come low, फिर हम अगले हाई के तलाश में निकल जाते हैं और फिर हम फिर लो आ जाते हैं. It's constant. So this is why so many actors look for other ways to maintain that high. Yeah. And to have that constant attention, जो आज का social media, I mean, I'm also a part of it. I just have to be part of it, right? This is the work I do. But it's now I've unfollowed so many people because all I see is. Thanks, Khalid. I saw. I don't think you shouldn't have, yeah. I don't think I'm not even following. नहीं अनफॉलो नहीं किया आपने, कभी फॉलो ही नहीं किया. You know, so that's so, and we need to ask the question, मुझे क्यों क्योंकि तन्हाई महसूस होती जब आप जब जहाँ पर आप हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, you know, एक नाम है, पहचानते हैं लोग समझते कि आपके इर्द गिर्द लड़के घूम रही होती हैं. मैंने कहा when I was single, मैंने कहा नहीं, that's not the case at all. In fact, it's very lonely up here. And so I had to sit down with myself and ask myself, what do I want? You know, what do I really want? And so it's about removing some of those masks and going back to, like, you know, why do I need so much attention? Why do I crave this attention? And once you, जब एक दफा आप उस attention seeking से detach हो जाते हैं, फिर मामला थोड़े सही हो जाते हैं. ये आप खुद पहुंचे, because this sounds like an LSD trip. Did you reach energy trip? LSD trip. LSD, no. आज तक मैंने किया ही नहीं. Did you get here yourself? Yeah, these questions through many trials, through a whole lot of crap, and through a whole lot of darkness. But yeah, so you know, it's we do need to do inner work. Again, हमारे मुल्क में इखलाकियात नहीं है और अपनों की कदर नहीं करते. No, but this is so true. Like it's I've come to a point in my life. Abhi even weekend पे somebody was like, अच्छा मिलते हैं, because they were in town. I was like, हाँ मिलते हैं. Then they said, अच्छा नहीं, we're all going to this party, तो यहीं आ जाओ. I said नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं अपनी एनर्जी एक पार्टी पे जाके वेस्ट करूँ. तुमने मिलना है तो we'll meet. Yeah. But that's not a place. Not that I'm averse to partying. If I want to, I will. But it's a decision. Okay, if I'm going to go to that place where there'll be so many people, ये मेरी एक energy expenditure होगा. So it's not as simple as YOLO हर time party करते रहो. It's a decision कि मैंने कहाँ अपनी energy expend करनी है, because my energy is important to me. Yeah, and I did my partying thing. I did it. I'm over it. वो एक बन गया जोक, तो रिपीट होता जा रहा है. And so, you know, I just don't know. It's been a while. मुझे मियाँ बीवी हम दोनों, हम तो रात जाग भी सकते हैं. हम कोशिश भी करते, हम next day we are like gone. आपने कभी किया है पूरी रात पार्टिंग करके सुबह मॉर्निंग शो? I'm sure सारी रात शूट करके मैंने वो किया, पार्टी नहीं की सारी रात. पाकिस्तान में सारी रात, हाँ एक न्यू ईयर्स पार्टी सारी रात की थी, लेकिन वो अगले दिन छुट्टी थी. The best New Year's party ever. But I've shot all night and gone to the studio and had that energy still. अभी भी कभी all night shoot जब होती है, and I go to the studio and शुक्र है कि सोफा है वहाँ पर. तो यार ये आधे घंटे से एड्स आ रहे हैं, ये खालिद मलिक का लिंक क्यों नहीं आया? खास रमजान के महीने में तो मैं गाने कोक स्टूडियो के गाने चला देता बजा के थोड़ा. मुझे बुला लेना यार 10 मिनट के बाद. ये नुसरत की 24 मिनट की कवाली चल रही है. खालिद मलिक नैप ले रहे. Normally, do you wake up slightly earlier, workout or something, or is it just like brushing in the? No. So I wake up at, my alarm is set for 5:15. Wow. So, and then I'll wake up and, you know, do my prayers and have a whole ritual, and I do that, and then I get ready and come. Cold shower. I take cold showers. बहुत healthy चल रहे हैं. But cold showers, we try it. Yeah, I've heard. I know for a fact. बहुत popular हो गया cold showers. और मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ. And so yeah, that's what I do. So I get 5:15 my alarm. मैं भूल गया उनका, but one of the biggest voices and preachers of cold showers, वो literally he's like, ये जो जिन लोगों को बीमारियां मेरे पास 6 महीने भेज दें आप, वो स्कैंडिनेविया के फिनलैंड में. वो Wim Hof.
Yes, that guy. Yeah. Like मैं उनको ice baths करवाऊंगा और Yeah. फिर आप हमारे blood, and that guy is like, आप inject me with Viruses, dude. viruses and then I'll do my cold showers and आप Yeah. blood test कर लें. Yeah, absolutely. Amazing. He's yeah, I follow him. So yeah, cold showers. But what's the idea? The idea is कि inflammation नहीं होगी. So cold is an anti-inflammatory. It's anti-aging. That's your secret. That's my secret. That's how you look like this at Anti-aging. 70. You and Shehzad Roy and Manur Baloch. और सर्दी नहीं लगती आपको बाद में? Really? नहीं, गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं बाद में आपको थोड़ी सर्दी लगती है. अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे बाद में आप कुछ नहीं होगा. सर्दी And is it like slow adjust into ठंडा या is it direct ठंडा? जब गीजर ना काम करता हो ना तो फिर डायरेक्ट ठंडा होता है. But what's better for you? Like direct? Better for me is it's what Shock is better, right? It's better. लेकिन ये नहीं कि एकदम you first sort of shower your arms. You let your body know that you're going to go into a bit of a shock, and then your other arm, and then your legs, and then sort of a bit of your back, and then dive in, and then when I'm under it, I go, and you start breathing, and you start like doing it. लेकिन पता है कराची में जो ठंडा है ना वो ठंडा पानी जोक है. ठंडा पानी इस्लामाबाद में आप ठंडा शावर लें सर्दियों के मौसम में वो ठंडा पानी है. लोगों ने अपने घर पे किए हैं बिकॉज आई बाहर तो जगहें होती है ना कि आप जाकर आइस बाथ ले लें, कायरो चेम्बर्स कर लें, तो लोग खुद अपने टब में बर्फें भरकर. But that's what I was thinking, that people who do a cold plunge and swear by it, that's a direct, that's not an acclimatization. No, but what they do is they do a little exercise before that. They warm the body up before that. ये नहीं कि direct. So even sometimes what I do is, अच्छा, so like football खेलने के बाद जो करते हैं, that's the idea. Do push-ups. Okay. Do like 10-20 push-ups. You can feel yourself, okay, now I'm heating up a bit, my blood is a little, and then you get into the cold shower. So in the bathrooms, अपने आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, लेकिन push-ups कर रहा होता हूँ. एक वीडियो ट्यूटोरियल अगर जो आप सब्सक्रिप्शन सर्विस चला रहे हैं ना उसमें ये वीडियो, I think this is how you will get subscribed. Right? Yeah. So yeah. Okay, that makes sense because जो football players होते हैं, after playing a match, they jump into the ice bath because वो 90 minutes उनका workout हो चुका है. So that from extreme heat to extreme cold, that's what's working for them. Yeah. So ये wellness journey always, by the way, आप ये जो बातें कर रहे हैं, मैं these days I'm interested in these things. That's what they recommend. They're like, as surprising as it sounds, हम लोग अपने माँ बाप का मजाक उड़ाते थे कि सुबह जल्दी उठा करो, क्या बकवास है, सुबह जल्दी उठ के क्या हो जाएगा. But so many people are now like, if you want to improve your life, wake up at 5 a.m. You see, जो अल्लाह ने ये वजूद हमें दिया, ये जो खाकी जो वर्दी है, जो अंदर की जो फिजियोलॉजी है और जो दिन और रात है, इसका एक मकसद है, इसका एक रिदम है. एंड सो दिन बनाए ताकि आप काम कर सकें, एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिव हो. रात इसलिए बनाए ताकि आप थोड़ा चिल करें और थोड़ा अब ना आराम करें, रेगुलेट योर सेल्फ सो दैट यू एबल टू गिव योर बॉडी सम रेस्ट. हमारे यहाँ उल्टा है. I mean, नहीं भी बनाया होता तो हम in the centuries of evolution है. So genetically our bodies are used to, I mean our ancestors do not have a possibility कि हम रात में party करें. And so as you rise with the sun, there's a difference as opposed to waking up at 2 in the afternoon जब सूरज बिल्कुल आपके सर पे चढ़ा हुआ है. There's a difference. There's a difference in your way of thinking. It makes a difference to your mood. जब आप सुबह उठते हैं फजर के वक्त, silence. And that silence is bliss. And it's just you and your conscious and your Lord. And it's just silence. लेकिन जब आप दोपहर को 2 बजे उठते हैं, कहाँ आपको साइलेंस मिले? बाहर तो ठेले वाला मिलेगा, बाहर ट्रैफिक का शोर है. Your body is you hit instantly with that noise. Your brain waves, they need time to come to. There's different brain waves, right? So you and I right now, we're engaging in beta, right? There's just a more active brain wave, and then we go into more deeper, the sort of alpha and the delta and theta. We get into a sleep state. So you need time. The brain needs time to wake up. हम तो उठते ही हम बस phone and the brain like going, shit, dude, you're doing my head in. It makes a huge difference. One of the worst things you can do is wake up and look at your phone. Oh, I don't. Phone तो मेरा airplane mode पे होता है रात के वक्त. Wow. Yeah, I'm always on airplane mode. I don't check my social until I leave the house.
देन आई चेक। और अक्सर मुझे वापस जाना होता है क्योंकि मैसेज आता है कि आज खालिद भाई वार्डरोब लेकर आए थे। तेरी मैं रहता भी बहुत दूर हूँ तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। So, yeah. Wow. So all these things that you are talking about, these are what people say कि अगर आपने हेल्दी होना है 5 बजे उठें, कोल्ड शावर्स लें, घंटा एटलीस्ट उठने के बाद फोन मत देखें। Yeah, I just don't. Because you're also एक तो आप जो बात करें फिजियोलॉजी है, but you're also training your mind, right? Like if I wake up and there's an email from my boss, मैं ऑलरेडी उस मोड में चला गया हूँ। ठीक है, आइदर आई एम इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ, या उसमें सोशल मीडिया खोलूँ, अच्छा जी आज इस पे वो चीट कर रहा है। दैट्स, अगर मैं पहला इम्पेटस अपने दिमाग को वो दे रहा हूँ तो आई एम ट्रेनिंग माई माइंड कि ये चीज़ों पे फोकस करो। और जो बॉस की जो ईमेल है ना, अगर आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लें, एक दिन सुबह उठें, फोन को हाथ ना लगाएं और उसी बॉस को ईमेल आप देखें, नोटिस हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट। और फिर एक काम करें कि नेक्स्ट डे वेक अप विद द फोन विद ऑल द न्यूज एंड दैट सेम बॉस's ईमेल, नोटिस हाउ यू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू दैट। यू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन बोथ इंस्टेंसेस। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहला जो इंस्टेंस है, उसमें आपके जिस्म को, आपके रिदम को, नेचुरल रिदम को, फिजियोलॉजी को मौका दिया गया है कि आप आराम से यू वेक अप। एंड सो जो रिस्पॉन्स है, इट्स वेरी डिफरेंट एज अपोज टू झटके से आप उठें और फोन आपने देख लिया और ये खबर पढ़ लिया और आज ये US डॉलर हो गया, ये हो गया है, and then you got a boss email, it's completely different. Yeah, I don't think our brains are designed for what the world exists, right? Like अगर मैं सुबह उठूं और पोर्टोरिको में हरिकेन आया हुआ है, जापान में टाइफून आया हुआ है, पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं, एंड मैं 6 tweets देखूं and it's this, right? And how do I get out of bed after that? Because now दुनिया की टेंशन है मेरे दिमाग में। ह्यूमन ब्रेन डिजाइंड ही नहीं है कि इतनी इंफॉर्मेशन लेकर ऑपरेट कर सके। Absolutely spot on. So all this wellness things that you are doing, you're really getting into wellness, because ab that's what your mentoring program, isn't that what it's focused on? Which is why I wanted to get advertisement है सर ये आपके लिए आज की पॉडकास्ट लिए को पता नहीं चला है। Thank you Khalid Malik for the money you've given me for having you. But isn't this what you're absolutely, it's part of my mission। और खास तौर पे जो हमारे मर्द हजरात हैं, उनको मैं आपका मेरे ख्याल से I think major client हूँ अब। you know, men need that space, and that's my mission, to give men that space. And so it's mentoring. I like to call it mentoring. Mentoring. And so वैसे मैंने ये एंगल नहीं सोचा था। अच्छा, शुक्रिया। So the wellness is part of it, and I speak to a lot of men who are sex addicts, speak to a lot of men who are porn addicts, and so this is a societal issue. लोगों के साथ कितनी ज्यादती होती है ना, कितनी मुश्किल उनकी जिंदगी है। आपकी मुश्किलात क्या है? बहुत सेक्स मिल रहा है, बहुत जिंदगी मुश्किल है। हर लड़की जैसे मिलता हूँ सेक्स करना चाहती है, मैं क्या करूँ खालिद, प्लीज हेल्प मी। ये कौन लोग ये इशू है, ये किसके लिए इशू है? अल्लाह इसकी मुश्किलात मुझे दे। ये कौन लोग हैं जिनके ये मसले हैं? But men, we need help. Men need help in Pakistan, खास तौर पे। Let's get into this, because I think a lot of times when people talk about this, male mentors जो हैं हमारे, वो बहुत बुरे हैं। वो जो एक masculinity preach करने आते हैं, the crisis of masculinity is often described in words which tend to go in the direction of toxic masculinity, right? Like Andrew Tate, अगर आप देख रहे हैं, वो आजकल एक बड़े मेल हीरो बन गए हैं, जो औरतों को लिटरली ऑब्जेक्ट समझते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं। फिर हमारे लोग भी कुछ हैं, वो भले उसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आए या कल्चरल पर्सपेक्टिव से आए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या स्कॉलर्स हों या टिकटॉकर्स हों, वो मर्दानगी को औरतों को तजलील करना समझते हैं। तो we don't really have good male mentors that boys can look up to who don't go down the angle of toxic masculinity. We don't. हकीकत है। और we don't want to get too deep on this, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो घर है, घर का माहौल, ये बुनियाद है। वहाँ से आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है बतौर एक लड़का। What do I see? I see boys in big bodies who are unable to cope with big emotions. Big emotions क्या है? Anger, shame, guilt. That's what I see. Little boys in big bodies.
जिनको पता नहीं कि ये जो इमोशंस हैं, जैसे आप गिल्ट और शेम करें, मैं इनके साथ करूं, क्या करूं मैं? अगर मैं फोन उठा के, अपना लैपटॉप उठा के दीवार पे ना मारूं तो और मैं क्या करूं? They don't know, they haven't been told. Because बतौर मर्द हमें यही बताया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम हल करो जाके, you fix the problem, you're the problem fixer, and fix the problem and do it on your own. खुद सोचो, खुद करो, ये क्या तुम किसी से मदद मांगने जा रहे हो? नहीं, खुद करो। अब वो खुद करो के चक्कर में आप अपनी जो ना लगा देते हो बस। इसमें जो आपने गुस्से की बात की, यस, मैन फील गिल्टी, मैन फील शेम, मैन फील सैडनेस, लेकिन हमें ये रंग दिए नहीं गए हैं। हमें जो सोसाइटी है, जब औरतें जेंडर रोल्स की बातें करती हैं तो कुछ मर्द नाराज़ हो जाते हैं, हमारे मसले क्या हैं? नहीं, वो आपके मसलों की भी बात कर रही हैं जब वो जेंडर रोल्स के ख़िलाफ़ बात करती हैं। बिकॉज अगर एक रंग बिरंगी दुनिया में आपको सिर्फ लाल दिया गया है और आपने हर चीज़ में लाल ही लगाना है, तो आपकी क्या बदमज़गी, आपकी ज़िंदगी कितनी शैलो है। All men are taught is anger is the only way your emotion should come out. And whether it's love, मर्द मारते तो जो गुस्सा करते तो प्यार करते हैं। What a stupid idea. But men literally, आपको प्यार करना हो, आपको शेम हो, आपको गिल्ट हो, आपकी अपनी इनसिक्योरिटी हो, वो गुस्से में ही निकलता है। आप जब क्रिकेट मैच देखकर किसी को गाली दे रहे होते हो, वो आपका गुस्सा है। या अगर कोई आकर आपसे इख्तलाफ करता है या बोलता है मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ या मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ, या वो आपके फेवरेट इंसान की तनकीद करता है और आप उसको पर्सनली गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मर्दों को सिर्फ दिया गया ही गुस्सा है कि और लेन्स आपके लिए सारी बंद हैं। एंड ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी हमारी, उसने ही किया है, मर्दों ने ही किया है, हमने ये सोसाइटी बनाई है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जब आप उनको वही रास्ता दिखाते हैं तो वो सीखते भी नहीं है कि the other emotions are also available to me. It's a myriad of emotions I can use. क्योंकि वालिदैन को भी नहीं पता ना जी, मेरे वालिदैन को तो नहीं पता था कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ब्रीदिंग, फिर वो तेरा ब्रीदिंग, सांस लेना नहीं आता हमें। They didn't know. अब तू सिखाएगा हमें सांस कैसे लेना है? आज तक हम सांस नहीं ले रहे थे जैसे। हाँ, तू आगे सांस लेनी है। हाँ, आज तक तो हम ऑक्सीजन पे थे। But you can't blame them. So as adults, of course, it's not my responsibility. Yeah. It's not their responsibility. It's my responsibility. You're an adult now, right? It's your responsibility to sort your crap out. It is, and go and seek. मैं तो सॉर्ट करता हूँ करने के बाद। अच्छा यार, ये रिसाइक्लेबल ये नहीं है, मिनिमलिस्ट। sorry मैंने आपको काटा। No, that's it. So yeah, so that's how my mission. So like the lot of, जिस तरह आपने बोला, little boys in big bodies जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, how do they start? Because they genuinely don't know. Well, number one, look at who you're with. जो सोहबत है ना, बहुत जरूरी है। आपकी सोहबत, आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, वो जो आपके बॉयज का ग्रुप है, वो क्या बात कर रहे हैं? क्या लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं या ड्रग्स? What are they talking about? You'll know a lot about yourself by looking at the people that surround you. You're the sum average of the 7 people you hang out with. Truly. Maulana Rumi रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि the road to enlightenment is twofold. Number one, be of service. Number two, sohbat. Surround yourself with people who are better than you. In terms of character, in terms of speech, and aspire to that. And so look, first step is कि मेरे इर्द गिर्द कौन है? Are they really people that are they really negative? हमेशा ये बात करते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। कोई और भी कोई बात करता है या नहीं है? Then maybe you want to look outside that circle. थोड़ा अपना दायरा को थोड़ा वसी करें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि go and seek help. Someone you trust. There's a lot of good people out there. Go and seek help and tell them, you know what, I need help. I feel कि कुछ खतरनाक होने वाला है। इससे पहले कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, मुझे मदद की ज़रूरत है। And these people, लोग हैं बाहर जो they're there for you. So that's what I would do. That's what I did. And so years of therapy, years of whatever. And, that's what you need to do. बट यहाँ पर तो 40-50 साल के बॉसेस हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार चुके हैं। एंड आई थिंक अफसोस की बात है। आई लव यू सरफराज अहमद, आपने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। आई एम यू वॉच क्रिकेट? बहुत कम।
बट वो मतलब उनका कैप्टनसी का स्टाइल अब तो स्पेशली क्वेटा ग्लैडिएटर्स में बहुत ये है कि बस गालियां दो सबको और तो सब उस तरह एक चलेंगे, जिससे मैं थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ. लव यू सरफराज, थोड़ा क्रिटिसिज्म है. But that's how most bosses in Pakistan operate. They think the way to get things done is सबको गालियां दो, ऑफिस जाओ, सुनाओ, and you're a great leader. That's what makes you a great leader. So what made you realize कि oh no, I need to go down a different path? जो आप जब कह रहे हैं कि years ago आपने ये किया, what was that which made you realize कि नहीं, मैं इस रास्ते गलत जा रहा हूँ? My own suffering. Literally my own suffering. And as a result of my own suffering, watching people around me suffer because I was suffering. And so that was for me a wake-up call. और पहले भी मैं करता ही था, लेकिन वो बीच में ना डावाडोल हो गया या कहीं किसी और रास्ते पे चला गया. And हालांकि at the back of my head I always knew I'd come back. I just didn't know when or how. And so that for me was a wake-up call. And then I decided to go back to my own essence. Everyone has an essence. Everyone has an inner voice, and it's going back to that. कि वो क्या है, वो क्या मुझे, क्या जो अंदर का जो खालिद क्या मुझे बताना चाह रहा है. वो कुरान भी डिस्क्राइब करता है कि ऐसा है कि आप समंदर के बिल्कुल डेप्थ पर हैं. It describes it as being you're at the depths of the ocean with wave upon wave, cloud upon cloud, cloud upon cloud, and you're unable to see your own hand. उस किस्म का अंधेरा जहां आपको अपना हाथ नजर नहीं आ रहा. But there is always a light. नूरुल जिसे कहते हैं ना, खुदा का नूर. There's always that light. But you need to have this connection with your own soul, because your soul is always connected to Rabb, where the light is. And when you're in the depth of that ocean, when there's darkness, शहजाद, यानी कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा ना. मतलब सोच ले कि समुद्र की बिल्कुल गहराई पे अंधेरा है, एयर प्रेशर नहीं है, सांस नहीं ले सकते आप. आज के जो suicidal rates है वो क्यों है? क्योंकि that's where they are. They find themselves in the depths of the ocean. And so the purpose is, listen, start, there's light, just begin. एक टेक मोमेंटम का होना बहुत जरूरी है. मोमेंटम क्या है भाई? देखें अपने इर्द गिर्द कौन लोग हैं. अच्छा ठीक है, फिर देखें कि आपके अंदर की सोच क्या है. फिर देखें कि आप कोई है मेरे इर्द गिर्द या कोई ऊपर, अगर मैं झांक कर देखूं, अगर हिम्मत करूं थोड़ा सा, क्या मुझे कोई रोशनी नजर आ रही है? एंड देन रीच फॉर दैट लाइट, एंड देन यू कम डाउन अगेन, रीच फॉर इट अगेन, एंड गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट सफरिंग. आप भी कर सकते हो, और तो कोई नहीं कर सकता आपके लिए. I mean, I 100% relate because I've been there. I mean, the hardest battles that you fight are battles that nobody sees, right? Like nobody gives you credit for putting on socks in the morning, but sometimes that's the hardest part of your day. Yeah. Like अगर कोई visible किसी का accident हो गया, you're like, हाय बेचारा. बिल्कुल. But जो आप डेप्थ्स ऑफ द ओशन की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को वहां से वापस खुद लेकर आए हैं अकेले, हमें पता भी नहीं चलता. That's a struggle. It is. It's the biggest struggle that anybody can go through. Yeah. And we don't give people the tools. We just people who are there. Which is why mentorship is very important. I've had many mentors, still have mentors. And so when I go through any kind of suffering, I always ask them for their counsel. Okay, I screwed up. जो suffering आप कह रहे हैं, was that internal or did it have external manifestations? It had external manifestations, but it was very internal. And it's not just one. It's cumulative, over my years of being in this world. And so it's basically खुदा आपको याद दिला रहा है कि भाई तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने बल्कि वादा किया, तुमने अफर्म किया था कि मैं तुम्हारा रब हूं. तो जब when you're going through suffering, इशारा है रब की तरफ से कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुमने वादा किया था, कि तुमने कहा था, अफर्म किया था कि मैं तुम्हारा रब हूं. अगर जब अफर्म किया ही है तो वापस आओ, मेरे पास आओ. अगर राहत चाहते हो, अगर पीस, अमन चाहते हो, कम बैक टू मी. The suffering is, देखिए हमने जो है ना, इस पाकिस्तान में खास हो, हमने हर चीज को पाइल्स में रखा हुआ है. ये फलां पार्टी है, ये फलां पार्टी है, ये मर्द है, ये औरत है, ये मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है. हमने पाइल्स में डाला हुआ है. कितने सारे पाइल्स हैं. Do you know what I mean? We put everything into piles. लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ 2 पाइल हैं. एक पाइल, am I
as Khalid or as Shehzad connected to my inner being, or am I in the pile that is disconnected from my inner being? बस अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, यानी कि अपने आप से कनेक्टेड है, अपने रब से कनेक्टेड है, आपको कहीं पर तफरका नजर नहीं, आपको कहीं फर्क नजर नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही आप डिस्कनेक्टेड है अपने आप से, अपने रूह से, अपने रब से, फिर आपको हर जगह डिस्कनेक्शन, वो पोलैरिटी नजर आएगी आपको. अच्छा बुरा, नफरत, प्यार, ये सपोर्टर, वो सपोर्टर, I'm better, she's better, comparison is because you're no longer connected to your inner being. There's only two powers, connection and disconnect. That's it. Let's keep it simple. I agree with you because but यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है ना. आप जब एक आंखें खोल जाएं तो समझ में आ जाता है, अच्छा this is me, this is not me. It is as simple as मैं यहाँ गया और how I felt before I went there and how I felt after. The after is worse, so I should not go there. It sounds very simple. कि just listen to your body, right? अगर आप एक दोस्त से मिलते हैं और हर दफा जब मिलते हैं मूड खराब हो जाता है, ना मिलो बड़ा एक सिंपल साउंड करता है, बट ये रियलाइजेशन थोड़ी मुश्किल है. मतलब लोग people don't get there, people don't. One of the first things I worked on in therapy was she said के do you look in the mirror and ask how does Shehzad feel? And I'm like, नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों अपने आप से इस तरह बात करूँगा. Shehzad तू है, मैं कोई द रॉक हूँ, मैं थर्ड पर्सन में. If you feel what Shehzad is feeling. But that's what I do, by the way. But that's now I know okay what she meant by that. Look in the mirror, शीशे में देखें अपने आप को. अगर आप डाउन महसूस कर रहे हो अपने आप को, अगर आप एहसास से कमतरी का शिकार बन चुके हैं, हो चुके हैं, I look myself in the mirror. You know what, Khalid, you did well. You handled that well. You've achieved. And I talk to myself. हाँ, कहेंगे यार तुम अपने आप को छोड़ा. No, it's about just giving yourself credit and recognizing you. It's important. I think ego और self esteem में लोग फर्क नहीं करते. You know, my daughter came to me the other day, and Baba, can I share something? I said, sure. She said, do I look fat? 8 साल की बच्ची है. एक तो बाप और I was like inside I was like, who the hell said that? I'm gonna screw that person over. I said, no Khalid, calm down. I said, अंदर ये हो रहा है कि बाहर ज़ाहिरी तौर पे why beta? Why do you say that? Some boy, again a boy. चलें अपने 8 साल के बच्चे. Again आप अपने घर में क्या, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, तो बड़ी मोटी लग रही हो. क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप उस बच्चे के सामने? एक तो ये खैर. So I said, okay, you know what, I don't think you're fat. हम भी बॉडी शेमिंग की बात करते हैं. What I did was I said, because I practice it, I go in front of the mirror and I sometimes go in the front of the mirror before a shower and look at myself and I go, okay, I'm getting a bit of a belly right now, but you know what, I love it. It's a dad bod. Sexy little thing. I go in the shower. You know, I don't know, you might call it bus. So I took her in front of the mirror. ये headline है. Khalid looks in the mirror and he's like, looks down and says, you sexy little thing. ये आज की. And I took her in front of the mirror. I go, look at yourself in the mirror. She's shy and she looked at herself. I was standing with her and I said to her, tell me 3 things you like about yourself. Look in the mirror. There's 3 things that you really love about yourself. She goes, Baba, I love my hair. I love my hands. And I think she said, I love my forehead or something. And I said, wow. And you know what I also love? I love your smile. And I love these cheeks. And so, you know, as parents हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है. Conscious parenting की बात करते हैं. You can only do that if you do your work yourself. You know, and so our kids are going through this also. So we need to know as parents कि हमें कैसे इसको handle करना. मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके साथ बाप या माँ तो ये सोचे किसकी हिम्मत है जिसने ये बात की हो. But no, your kids are going to go through challenges. They're going to go through trauma. आपका काम नहीं है, आपका काम है गाइड करना, समझाना भी नहीं. आपका काम है गाइड करना. वो खुद अपने नतीजे पे पहुंच जाएंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. You can only give them skills. I think a lot of time parents try कि हम प्रोटेक्ट घर में दबाओगे
कमरे में बंद कर लें तो पूरी दुनिया से छुपा कर रख लें, बट उससे कभी फायदा नहीं होता. You they will go through shit. The best you can do is give them the skills के यार ये तरीके हैं. I mean obviously it's hard as a dad as well, but maybe it's slightly easier when things are external to you, right? Like even if a friend comes to you and says, oh, I think I'm ugly, and you're like, पागल तो नहीं हो गई है, दिमाग खराब हो गया है. But when these voices come from inside your head, they're much harder to deal with. Was there a way, or was there an event which made you realize that a lot of voices that we hear inside our head are not actually ours? These are voices that we've internalized. Through evolution, my own evolution. I mean, मर्द की बात करते हैं तो जब एक लड़की ब्रेकअप करती है तो क्या करती है? दोस्त को फोन करती है, रोती है, थोड़ा इजहार करती है. मर्द क्या करता है? Remember when I divorced, my first divorce, I used to work in a call center, and the guy next to me goes, I said, I just got divorced. It sucks. It's fucked up. And he goes, hey, let's go get laid tonight. Best way to get over is to get under. That was his he was cure. He said, I broke up and I went, Khalid, this is Australia ki baat kar raha hu. I got laid three times that night. Oh man, I never look back. Let's go get laid tonight. ऑस्ट्रेलिया में तो मजा आ रहे हैं लोगों के यार. ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी अगर आप देख रहे हैं और मुझे वीजा देना चाहते हैं, आई डू वांट टू गो डाउन अंडर. Did you see the difference? कि मर्द जो है अपने जज्बात को, एहसासात को मास्क करने की बहुत कोशिश करता है. Cool. कि यार काम करते हैं, आज जाके पीते हैं कुछ, या काम करते हैं, आज जाके let's do this, let's go go to this kind of party and go and get laid and so on. But आप क्या रहे हैं? You're not doing any service to yourself, just masking yourself even more. तो मर्दों से गुजारिश है कि और भी तरीके हैं. आप अपने आप को, अगर आप इस अंधेरे में इस वक्त आप हैं, seek out help. अपने आप को कमजोर ना समझे. You don't have to do it on your own. I think हम इसलिए एक दूसरे को ये एडवाइस देते हैं because हमारे पास खुद भी तो skills नहीं है, right? And another harsh lesson that I've learned in life is that you don't get over anything unless you get over it. ये जो आप जितना distract करेंगे ना, आप prolong कर रहे हैं pain. वो जो slow banded removal होता है उससे नहीं होता. You have to sit with your feelings. And if there is pain there, and if you feel like कि आपके साथ बुरा हुआ, and if you feel like ये like if I was rejected or somebody did bad to me or somebody gaslighted me, आप पहले तो excuses बनाए ना, आपका ego आ जाता है कि नहीं ये you find a narrative that protects yourself. बिल्कुल. But that only prolongs the pain. You have to sit and be like ये यहाँ दर्द है और अब मैंने ये दर्द फील करना है. वो 1 रात लगे, 2 रात लगे, 3 रात लगे, बट जब तक वो बैठ कर आप बोलें कि अच्छा ये वूंड है, चल बहे खून इसमें से, जरूरी नॉट फिजिकली बिकॉज वो मर जाएंगे ब्लड लॉस से, बट इमोशनली यू हैव टू सिट इन दैट पेन एंड फील इट फॉर यू टू गेट ओवर. स्टीव हार्वी ने कहा था ना कि मैन इफ यू गोइंग थ्रू हेल जस्ट कीप गोइंग, व्हाई वुड यू स्टॉप? So what he's saying is the only way to get over it is to go through it. Yes. That's the only way you're going to get over anything. कि आपने बस पार करना, आपने आंधी है, तूफान है. और वो कुछ भी हो सकता है. मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा की भी जब लोग बात करते हैं, आपको पता भी नहीं है, आपके पास आर्टिकुलेशन भी नहीं है, आपके पास लफ्ज भी नहीं है, बस आप वो वूंड कैरी करते जा रहे हैं. आप जिस तरह क्रोम में 6000 टैब्स हैं और क्रोम शेक होना शुरू हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? दूसरे टैब्स खोलो और उनको बंद करो. एंड एज हार्ड एज इट साउंड्स, पीपल नीड टू सिट एंड बी लाइक, अच्छा ये जो 6th grade का मेरा मसला था, इस टैब को मैं कैसे बंद करूं? And it's a process and it's hard work, but I don't think people do that. Are you still doing therapy? I am not still doing therapy, but I've done therapy for years. And I've ये भी तो लड़के ये भी नहीं करता ना. I've done LSD, which also helps in these closing these tabs. Like I don't do the party wala. Microdose. No, but like पता नहीं ये लोग क्या समझे, but I'll sit with myself. Like I'll go in and I'll be like, अच्छा, you're not dealing with this. Why you're not dealing with this? Can we do a quick breathing exercise with you? Sure, go for it. Okay, just go back a bit, because you're gonna have to breathe. I don't know why I'm going back. तो तुम पीछे चले जाओ. मतलब कैमरे पे हो गया ना, तुम फ्रेम पे. हाँ. अगर तुम भी करना चाहो तुम कर सकते हो. I'll just tell you what we're gonna do. So I just want you to sit back, right? माइक आप अपने से करीब कर लें. तो माइक. अच्छा sorry. So I want you to sit back, and all I want you to do is breathe in and out through your mouth. Number 1, and
essentially when you breathe in, that's what you're doing. So you're doing, okay? Shallow or deep? Deep. So, and sort of a little speedy also. So I'll just do it away from the mic so that it doesn't breathe into the mic. Kuch aise, so it's like. नहीं, a lot of people like that. ASMR हो जाएगा. Okay, we're fine. Okay, let's go. So let me do it quickly first. So it's, okay? 10 times and we're going to pause. Okay? So you ready? A minute of silence for people who are only hearing the audio version. And they're like, हो क्या रहा है इस कमरे में? Close your eyes. YouTube पे आए, हम कपड़े उतार चुके हैं. जल्दी जाओ. You sexy little thing. अच्छा जी. Okay, so close your eyes. जी. Okay, and put your hand on your belly. जी. And so just relax. Just take a couple of just general deep breaths. So you're letting your body know अब कुछ होने वाला है. Okay, ready? And go. Quick. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Okay, wait. Now take a deep breath in. Deep breath out. Hold your breath on the out breath. Hold it. Hold it. We're going to start again. You don't have to go so fast. I'll go with you. Ready? 1, 2, go. Hold. Harder, daddy. Hold on the breathe out, on the breath out. Hold. Take a deep breath in. And go. Make a sound. Now close your eyes. You'll notice you might be a little dizzy. And you'll notice there's a little tingling in your body. And just notice this nothingness in your head. There's no thought. But there'll be interviewers, so you're in that mode. But notice that there is no thought. We meant to do this a little more, 3 rounds, 10 breaths, 20 breaths, 30 breaths. But it takes effort when you do it for the first time. You're like, okay, I can't do this anymore. But you push through that. At the end, you just sit with yourself. अगर आप गुस्से में भी थे ना, आपका गुस्सा चला जाएगा. And then you want to bring that thought back. जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया था, आप वो सोच भी रहे, लेकिन यार अब गुस्सा भी नहीं आ रहा. Do you notice that? I mean, we're on a podcast. Yeah. तो वो the especially because lights मेरे बिल्कुल दिमाग में, I'm conscious के cameras हैं. So it was a little harder, but I can imagine if I was doing it alone in my room. Then did you notice the tingling? I noticed the tingling, the dizziness, the lightheadedness. But I was still conscious. Yeah, no, you're still conscious. As in a podcast, like that thought but was there. But the volume of the thoughts turned down. What happens is, if you do this for 3 rounds, of course, the volume completely is almost like it's mute. And even now, it's a beautiful space. Similar, what I did in therapy was this balloon thing where my therapist would be like, take a deep breath in, जिस तरह आप balloon भर रहे हो, and then hold it, yeah, and फिर take out all the breath, इतना जिस तरह balloon से सारी हवा निकल जाए, and then बिल्कुल like you take out all the air. Doing that for a while also really helps. Oh like yeah, the feeling that you're talking about कि वो ऐसा लगता है कि कुछ weight yeah, उतर गया है ये करने के बाद से. So interesting that. Yeah. You know, when we talk about stress, so much of that is physiological. कि जब आप stress होते हैं, आपकी breathing shallow हो जाती है. So literally आपकी lungs और brain में oxygen नहीं जा रहा होता. तो ये dizziness क्यों है? क्यों आपने दिमाग को और cells को oxygen deliver कर रहे हैं? जो थी नहीं उनके पास. हाँ, थी नहीं उनके पास. इसलिए तो अजीब चक्कर आ रहे हैं आपको. दिमाग का ये कहाँ से आ गया? एक oxygen wave ये क्या चीज़ है? ये wave कहाँ से आ गया? So these wellness things that you're doing, these mentoring programs that you're doing, what do they look like? So let's say अगर मैं sign up करूँ. So the minimum time that I require is 8 weeks. And I've had clients that have come on for 8 weeks and said, I need more. And so 3 months, 6 months, sometimes turns into 12 months. And it's at your pace. And it's what is required by you at that time. So we take a little overview of your life as it is in different aspects of your life, relationships, work, etc. And then I ask you, where do you want to focus first? Where do you feel like you need some
sorting out first. And so wherever you feel, so if you say to me, my relationships, obviously we'll start there, but understand that the relationships will connect to a whole lot of other things. And so we'll go, it's like saying to you, listen, I'll go down this path with you, but instead of you doing it alone in darkness, I'll be behind you with a laltan. Taaki nazar bhi kuch aaye. And so that's the analogy. And so it's a whole lot of tools and techniques. It's not talk therapy. It's not therapy. I don't focus on your past so much. I'm more interested in where you are right now and where you want to be. तो वो जो गैप है ना कि शहजाद दुनिया के सामने ये है, लेकिन शहजाद जब कमरे में होते हैं वो ये है, गैप है. यानी कि ये तो हर मर्द के साथ, मेरे साथ भी, कि जब मैं घर पे तो जब मैं दुनिया के सामने पेश होता हूँ तो मैं कुछ और होता हूँ, लेकिन एक गैप है. तो इस गैप में क्या है? whole lot of shame, anger, guilt, insecurity, jealousy वगैरह वगैरह, all that fun stuff. So what we do is we go in, और कोशिश है कि हम उस गैप को कम कर दें, ताकि जो शहजाद चार दीवारी में है और जो शहजाद बाहर दुनिया की दीवार वो जो है वो एक है. There's no difference. The reason that we're in so much pain is because there's this huge gap. And so that's the path. And that requires a lot of men have come forward. And I want to give those men credit. अभी मैंने कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वर्कशॉप किया था, टाइटल पावर सेक्स मनी. 5 मर्द आए थे. But for me it was okay because the people that did come, they participated fully. कभी किसी और पॉडकास्ट में सेक्स की वाली सी बात करेंगे. And men, we really need to be educated about sex. I know where he's going with this. No, you said it. No, about sex, and especially married men and their aversion to therapy, their aversion to talk about their insecurities with sex with their partner. The importance of sex in our deen. हमें बताया जाता है कि sex bad है और खराब है, but the deen sees it as a form of worship with your wife, that is, in a marital situation. So there's a whole lot of stuff that needs to be talked about. मैं आपको एक और insight देता हूँ, and since you mentioned it, वैसे तो ये सब हम जो पॉडकास्ट में बात करते हैं वो सच नहीं होता, तो मैं फिक्शनली ये बात कर रहा हूँ कि बुक्स पढ़कर मैंने ये सीखा है. somebody was like, what's the most important thing that improved your sex life? And I was like, laughter. And they were like, कि क्या बात कर रहे हो? And again, obviously all these things are not true because I'm an unmarried man and I'm a virgin, good human being. Good human being. I'm looking. तो वो आप मुझसे राब्ता करें. जब आपका पार्टनर ना, like during and you start talking and laughing and sharing that, and where it's suddenly like, wait, ये तो normal चीजें हैं, where it's not like अच्छा मैं एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, like you need to be good at it. वो सारी चीजें छोड़कर when you're just sharing intimacy with somebody, it just changes your idea of what this act is and how much that improves that act. Yeah, is insane. You mean being present with your partner, just during being sex? like yourself. Yeah, not being like acha performance, not worrying about acha am I doing a good job, is she, and just sharing joy. देखिए मियां बीवी को ये डिस्कस करना चाहिए कि देखो this is what I like, what do you like, this is what I like. So हम बात ही नहीं करते ना. Men are so caught up in getting their own orgasm that they forget to satisfy their wives. You need to satisfy her too, and then maybe get satisfied yourself later. But we don't talk about these things. We don't. We need to talk to our spouses about what we like and what we don't like. What turns us on, what doesn't. It's very important to have that discussion, and we don't have that discussion as married couples. We don't have that discussion. Look down upon किया जाता है ना, जैसे पता कोई गंदी चीज है. I mean, if you're married, then religion, culture, सब कुछ सारी चीजें, कोई मसला मसाइल नहीं है. But still, for some reason, it's so taboo. And I think as a culture, we have a problem with female sexuality and female pleasure. Yeah. Unfortunately, female genital mutilation is also common. Well, not common, but especially in some really?
सम कम्युनिटीज Okay. लोग शायद नाराज हो जाएं, लेकिन जो सच है वो सच है. लाइक बोरी कम्युनिटी में तो I had no idea. prevalent. It's prevalent. Because again उसका ना कोई religious reason है, but somehow No. समझा जाता है कि अगर औरत को प्लेजर मिलेगा सेक्स से तो ये एक गंदी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए. आपको एज अ ड्यूटी करना चाहिए कि आपने बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स कर रहे हैं, प्रोक्रिएशन के लिए कर रहे हैं. प्लेजर के लिए सेक्स इज लुक डाउन अपॉन, वेयर एज इट्स अ गुड थिंग. आप अपने बेडरूम में बतौर मियाँ बीवी कुछ भी कर सकते हैं. दैट्स योर थिंग, व्हाटएवर टर्न्स यू ऑन. लेकिन शेयर तो करें. एंड आई एम सो सरप्राइज शहजाद कि जो कम उम्र के लड़के हैं, यानी कि 20-25 साल के, 30 साल के, जिन्होंने अभी शादी की है, एक तो दे सो अवर्स टू थेरेपी. नंबर वन दे सो अवर्स टू, या अवर्स नहीं कहना चाहिए, घबराते हैं अपने जो सेक्सुअल फैंटेसीज के हवाले से अपनी बीवी से बात करना, या द एक्चुअल एक्ट इटसेल्फ कि आई एम अफ्रेड कि शायद मुझे जज किया जाएगा, शायद कहीं ये ना समझें कि I have an impotence problem, or I don't get an erection hard. We self-judge, but damn it, talk to her. यकीनन उनको भी कुछ insecurities होंगे. Talk it out. It's stressful, dude. First night of the marriage, very stressful. You're not I don't know what to do. We don't know what to do. हमें कहाँ सिखाया जाता है या बताया जाता है. I went to an all boys Catholic college and I had sex education when मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था. I was taught how to put on a condom in 9th and 8th grade, I think, at school. Taught about the female body, taught about the male body. Yeah, I didn't understand it very much, but I kind of knew what a condom was and how to put it on. यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते ना ही. एक शायद कोशिश भी थी, शायद बीच में वो नाकाम हुई कोशिश. यहाँ पे तो हम गुड टच बैड टच नहीं कर सकते, बिकॉज लोगों को लगता है वो सेक्स एजुकेशन है. बच्चों को ये बताना कि बैड टच क्या. We do it with our children. My wife and I, especially my wife, she's very particular. इनको बताना जरूरी है. And we talk about body parts as they should be talked about. There's a name for the body part. Yeah. Just say it. And लोगों को लगता होगा कि लफ्ज़ गंदे हैं, बट somebody was doing field study in this. उनका एक पेपर था, so they were sharing their research and they found कि a lot of times children go and tell their parents, और parents को समझ में भी नहीं आता, because like this child went to the mother and they were like, the teacher touched my butterfly. And she would say that every day, and they were like, क्या बकवास कर रही है ना, मतलब बटरफ्लाई को कौन टच, क्या कुछ उसने तितली रखी हुई होगी. And they didn't even understand that what she was trying to tell them was कि the teacher was molesting me because she was not taught to use the correct words for the body parts, because वो words गंदे हैं. तो उसके पास vocabulary भी नहीं थी, but वो चाह कर भी नहीं बता सकी कि मेरे साथ क्या हो रहा है. खुलासा ये कि husbands, please satisfy your wives first and then get satisfied. बहुत शुक्रिया. That was a public service message. Before we end this, do you have any thoughts on this growing incel community? Do you know what an incel is? No. So the word comes from involuntary celibate. There are a lot of these boys who have low self-esteem issues. They think less on themselves. So they think that no woman would want to have sex with them. So they sort of adopt this persona कि औरतें तो जल्लादी हैं, तो इनको तो मार दो. इनके ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रीच किया जाता है. Are you serious? जी अभी मैं भूल गया, ऑस्ट्रेलिया में था, किसी मुल्क में था, where one of these incels took a car and औरतें साइकिल कर रही थी and just rammed the car because do you remember what country that was? So and then हमने भी सोल ब्रदर्स का पॉडकास्ट की थी, उसमें एक वॉइस नोट था where this guy was just like, ये औरतें तो और ये जो फेमिनिस्ट हैं ये तो होती ही हैं, इनके साथ तो मैं violent, proper violent terminology. And there are other boys who support that. Even raid groups बने हुए होते हैं with these young boys 13-14 साल के, are like ये औरत फेमिनिस्ट है. मेरे साथ इतना हो चुका है कि फेमिनिज्म सपोर्ट करते हैं, हम सारे साथ जाएंगे. And these like 20 क्या कुटेंगे, 13-14 साल के बच्चे हैं. वो ऑनलाइन जाकर ना कमेंट सेक्शन में, it's called a raid, and suddenly you get like
hundreds of comments, कुछ फारिग बैठे में 13-14 साल के बच्चे. So this growing incel culture where because boys have low self-esteem, that translates to no woman would ever want to have sex with me, so women are evil and women are the worst, and then that becomes proper violence against women. So if it's a young boy 13-14 years of age, again सवाल में जो घर का माहौल है, I'd like to see that, but these boys are suffering, and I don't mean that to sound like I have empathy, but I mean but one should. That they need help. और अगेन सारी बात फिर घर पे आ जाती है कि घर पे किस किस्म की बोली, किस किस्म की गुफ्तगू, जो मर्द है क्या वो जो बाप है क्या वो उस बच्चे के माँ को मारता है बच्चों के सामने, या गाली गलौज या गालियों के साथ बात करता है. जाहिर सी बात है अगर बच्चे ये देखो तो ये तो नॉर्मल है ना भाई, कि अगर मेरा बाप मेरी वालदा को गाली से बुला रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है. यानी कोई चाचा या कोई मामू या कोई टोकने वाला नहीं. तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी बीवी से? कोई भी नहीं है. या बाप माँ को मारता है, कोई टोकने वाला नहीं है. लिहाजा बच्चा तो सीखेगा ना, आपसे सीखेगा, माँ बाप से सीखेगा. उसने सीख रखे भाई बाप ने माँ को मारा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, नॉर्मल है, मैं भी करूंगा. Right, so again, it is a very deep-rooted problem, and there's no easy solution. But I wish मेरा एक था कुछ अर्से पहले कि to go to schools and teach and और कुछ tools, techniques इन लड़कियों को देना, और बाकायदा ऐसे topics पे बात करना. Sex. Why do we ignore it so much? It's happening in schools. They need to know. They need someone that they can speak to. They crave that. कि हम किसी से बात करना चाह रहे हैं, घर पे तो बात नहीं कर सकते, कुट लगती है, रफा दफा किया जाता है. टीचर से बात करें तो वो माँ बाप से शिकायत कर देती है, या कोई काउंसलर नहीं हो तो फिर शायद उनसे बात कर लें. We're forgetting that our children today are being faced and being bombarded by things that you and I didn't face when we were growing up. Yep. ये माहौल अलग है, इसको आपने अलग तरीके से समझना और संभालना और टैकल करना है. अब आप ढके छुपे लफ्जों में बात नहीं कर सकते, आप खुलेआम बात करना होगा अपने बच्चों से. आप नहीं बात करें तो कोई और तो बात करेगा ना. बेहतर ये नहीं कि आप बात कर लें. So this is it needs to start. वो खुल के बात कर रहे हैं. मैंने भी I started making a whole curriculum, and मैंने और लोगों से भी बात की थी, because a lot of times people say कि feminist बातें तो अच्छी कर रही हैं, but boys को कौन समझाएगा? सारा लेबर हम उनको क्यों देते हैं कि औरतें अपने हकूक के लिए भी लड़ें, फिर जाके बच्चों को भी बताएं? मतलब मर्द क्या कर रहे हैं? Somebody needs to talk to these boys, right? And like you said कि not to show empathy for them, but I do still have empathy for them, because 13-14 साल के बच्चे evil नहीं होते. I'm not defending what they do. Obviously, I've been a victim. I know कि वो जो करते हैं उससे आप क्या होता है, वो बहुत बुरी चीज़ है. लेकिन आपने जिस तरह बताया, वो 13-14 साल का है, वो घर में ये देखता है, अपने बाप जिसको हीरो समझता है वो ये करता है, वो देखता है, वो टीवी चलाता है, ड्रामों में ये हो रहा होता है, वो टॉक शो में जाता है, वहाँ खलील और रहमान कमर बैठ के जिस तरह की बातें करते हैं वो करते हैं, वो टिकटॉक खोलता है, मुफ्ती तारिक मसूद औरतों के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस आपने बैन कर दिया तो पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम ख़राब हो जाएगा. ठीक है, फिर वो देखता है कि जो उनके फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस बिल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं. फिर CII बोलता है नहीं, इस्लामिकली लाइटली आप वाइफ को बीट कर सकते हैं. फिर वो टिकटॉक खोलता है, एंड्रू टेट आ जाता है एक हीरो बन के. वो यूट्यूब खोलता है, जॉर्डन पीटरसन सबका हीरो बना हुआ है. जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिस तरह आपने साइंस पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर में बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जब उसको आप कचरा हर जगह दे रहे हैं, एक इम्प्रेशनेबल माइंड को, एक खुला दिमाग है 13 साल का, और उसमें जा ही कचरा आ रहा है, फिर उसके मुंह से कचरा निकलता है, न्योर लाइक करे ये जल्लाते नहीं उसको. you've not given that person a chance to succeed. And when people say अरे ये कौन मॉन्स्टर्स हैं जो पाकिस्तान में रेप कर देते हैं, औरतों को मार देते हैं, नहीं, आपने कल्चर ऐसा बनाया जिससे वो मॉन्स्टर्स नहीं निकलेंगे. क्रेडिट उनको देना चाहिए जो इस सोसाइटी में नहीं मॉन्स्टर्स बनते, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग टू बॉयज, उसका इनएविटेबल रिजल्ट मॉन्स्टर्स ही है. And we're seeing that now, the effects of that.
seeing that now. Thank you so much, Khalid, for all the work that you do. Is there any message that you'd want to give out to these boys or just people in general? No, I think there's been so many messages along the way. You know, जो बात मैंने और शहजाद ने इस पॉडकास्ट में किया, कुछ बात चिपक जाएंगी, कुछ बात will just fall to the floor. जो बात आपको समझ में आ रही है, बस उन बात को आप अपने लिए पैगाम के तौर पे समझ लें. क्योंकि I'm sure what we and I have spoken has resonated with a lot of people. जो बात समझ में आ गई, समझ लें वो आपके लिए पैगाम है. एंड जो बात नहीं समझ में आई शायद कल समझ में आ जाए, शायद परसों समझ में आ जाए. I mean, if you're in 6th grade, आप कॉलेज की एक किताब खोल लें तो आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी. Everybody is on their own journey. एक पॉडकास्ट सुन के तो कुछ नहीं बदल सकता. एंड नाउ hopefully we will see you doing these things. Hopefully, no. And anything that you need from us. Thank you, I appreciate it. I think no, because I genuinely feel somebody needs to talk to our boys. Because अब की जनरेशन में जो हम केसेस देख रहे हैं, ये तो फिर भी शायद थोड़े बेहतर थे, बट अब जो 12-13 साल के बच्चे हैं, अल्लाह माफ करे, ये 10 साल बाद क्या करेंगे? What do you see? Like क्या like what kind of stuff? I mean, if all they're online and saying कि ये feminist तो होती ही dash. फिर आप ट्विटर पे जाएं और कोई फीमेल जर्नलिस्ट है, उनके साथ जो होता है, जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सॉरी अगर कोई माइंड कर जाएगा ये लैंग्वेज, बट अगर कोई फीमेल जर्नलिस्ट किसी की तनकीद करती है और वो ट्रेंड हो रहा होता है कि जी फॉर गश्ती, ये तो है ही गश्ती, इसको मार दो, ये जब चीज़ें कैजुअली बोली जाती हैं हर जगह, तो ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, राइट? योर वर्ड्स, योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन. सो इफ़ यू ग्रो अप इन अ कल्चर वेयर इट्स नॉर्मल फॉर यू टू से कि इनको तो मार देना चाहिए. I don't want to repeat the shit that I've read online. If this is the culture these boys grow up in, I am worried for our boys. Genuinely, I am worried for our men, worried for our boys. मैं थक चुका हूँ शहजाद ये सुन के कि पाकिस्तानी मर्द तो ऐसे, पाकिस्तानी मर्द तो जैसे. I mean, come on, you know, aren't you tired of it? I mean, there is no male-female superiority. हमें समझाया गया है दीन में भी. The only superiority and inferiority is in piety. How aware are you of your own consciousness and how close you are to your own soul, your own connection. That's the superiority inferiority we're talking about. Not about who is a male and a female. It's got nothing to do with it. Got absolutely nothing to do with it. But we make it all about that. Hopefully बल्कि we'll maybe plan something कि schools जाके boys से बात करें और उनको थोड़ा सा let it out. ये चीज़ें मैं फ्री में भी कर लूँगा अगर लोग जो सुन रहे हैं, and they can facilitate. Somebody needs to, right? एक counter narrative तो जाए कम से कम. मतलब हम जाके जिंदगियां नहीं बदल देंगे, but at least they get to hear something different than all that they're hearing all day, every single day. And these cultures are toxic. लोगों ने बड़ी एक अलग साइड ही देख ली आपकी. People who are used to Good morning with Khalid. अरे यार लोगों मैंने सवाल नहीं पूछे, sorry. If you have 5 minutes, can I quickly ask all the questions? Go for it. How was it like working with Mohi Abro? कौन? Hey, Mohi, वैसे मैं बता दूँ, maybe you want to send him a separate clip or whatever, but Mohi Simuri, he was an intern, I think, at 91, शायद. But then he was also studying, I think, media at Ziauddin. तो मुझे बुलाया गया था Ziauddin media के स्टूडेंट से बात करने के लिए, doing a little lecture. But he was very diligently, he listened to the whole thing very diligently. पता नहीं कोई बात क्लिक की होगी उसको शायद. तो but every time he reaches out or we meet, he's been always very appreciative of whatever he thinks that I've done in this profession. I think I ran into him at Roadside Cafe one day. Good boy. When is Khalid starting his podcast? Is that a question? फराज अहमद का सवाल है. फराज अहमद, मैं बल्कि पता है शहजाद से यही बात हो रही थी इस पॉडकास्ट से पहले कि मुझे बताएं, और इनके जो साथी अब्दुल्ला हैं वो behind the camera, very good looking boy, but I think both of them, these good looking boys, are looking for women, so they're good boys.
marital service. आपने Uncle assume कर Khalid. लिया कि अब्दुल्ला सिंगल ही होगा. Oh, you're not उसने single? कभी मेंशन नहीं किया. I know why उसने I कुछ नहीं assumed. बोला. Khalid walked in and You're not single? इसकी कहाँ You're गर्लफ्रेंड married? You're single? Oh, you're not single. Okay, ठीक. Well, Khalid just assumed that like इसकी I कहाँ did. गर्लफ्रेंड होगी. लूजर साला बनियान में बैठा हुआ I है. did. इसकी कहाँ गर्लफ्रेंड क्या बात है जी. But I'm in the works of starting one. You've played thousands of songs over the years. What is the one song that you hate playing and the one song you always love playing? There's a Turkish song that I love playing, and people love listening to it. Hate playing? Country music I'm not very fond of, लेकिन लोग country music सुनते हैं. मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद. बट गा ये मुझे देता वो लिल नास वाले पसंद है. बस वही है. वो मुझे बेहतर लगता है. Why did he? अच्छा ये हम कर चुके हैं. What is the future of radio industry in Pakistan? What can be done to revive radio? Good question. यार I am an eternal optimist, और I think radio का future है. I like to think that it has a future, क्योंकि रेडियो अब बदल रहा है. रेडियो का जो लैंडस्केप वो भी बदल रहा है. रेडियो अब डिजिटल भी हो चुका है. रेडियो has become very interactive with Facebook and Instagram and other social media platforms, TikTok. So it's spreading its wings, if you will. So I always will say that radio has a future. Radio is dead. Bias Radio view. is dead. Video killed the radio star. How is he consistently one of the nicest, kindest, most humble and wholesome people ever? Very sweet. Ameen. I'll say to that. I'll take that as a dua. But कैसे हैं? और ये हमारी पॉडकास्ट की दोस्त सजीर शेख का सवाल है. I don't know. I think it comes down to my own sort of journey, my own suffering, my own ragada as a media professional, as a man, and really sort of connection or a attempt to connect with my Rabb, truly. Because realization that this is all temporary, और मौत आनी है. हर किसी ने और कुरान में भी लिखा है ना कि मौत चखनी है. it says, कि true success is when you begin to purify yourself. And then the Quran says, but you choose this world. You choose the life of this world. And so most of us have chosen the life of this world, and then we get into trouble. I mean, when we think, यार मुझे मेरे साथ मसले क्यों हो रहे हैं यार? How did he get his role for the first season of Chand Pe Dastak? Chand Pe Dastak, I'm trying to remember. This is a while ago now. Saifi, I think, was the director. उन्होंने शायद कास्ट किया था मुझे चांद पे. हाँ, मैंने फ्रेश थिएटर अभी किया ही था सानिया सैयद के साथ और शाहिद सिफात के साथ. तो उसमें जो एक कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया था, वो सैफी हसन को बहुत पसंद आया था. He said, यार, I want you to do that character in this series. So, why did Javed Jafri copy his style? Javed Jafri thank you for even thinking that I remotely might look like Javed Jafri, but I can assure you he has no idea about little known fact है, सलाम नमस्ते में खालिद थे ऑस्ट्रेलिया में. Exactly and approximately. The ghosts of the legs do not listen to the talks. वो आप थे ऑस्ट्रेलिया में, आप खड़े हुए एक्स्ट्रा थे, उन्होंने बोला अच्छा जावेद जाफरी है. Exactly. What is the anti-aging formula that you use? None, but I think again boring जवाब है. मुराकबा, cold shower, मुराकबा क्या होता है? meditation, and a connection to spirituality. That really, I think, there's no. My wife is a health coach, so खाना जो है सरसों के तेल में पकता है या देसी घी में. तो I think ये भी शायद एक राज है, पता नहीं. And the last सवाल जो ये एडिट करेंगे तो उनका सवाल होना बहुत जरूरी है. Sameer is asking how much of the breakfast show bits were your idea? Entirely mine. All of it. पाकिस्तान में आपके पास लग्जरी नहीं है कि आप बीबीसी की तरह आपका अलग प्रोड्यूसर हो. ये जितने भी हैं प्रेजेंटर्स अब्रॉड, the show is made for them. आपने बस अंदर आना है और देखना है ब्रीफ क्या है और आपने बस लेकर जाना है.
यहाँ पर you don't have that. That DJ character was fun. That was, by the way, an experiment. अच्छा था. Because I heard someone on another radio station speak like that. I was like so annoyed. मैंने कहा इसको मैं थोड़ा copy करता हूँ. And that really picked up, you know. I think 103 या कुछ इस टाइप का आता था उसपे एक DJ करसला. उफ अल्लाह, वो इतना बुरा होता था. And she had a knack for speaking in between songs. तो इट बी लाइक गाना चल रहा होगा ना कि सुनो के मैं हूँ जवान, आप जवान हैं, खुला है सारा आसमान, या द स्काई इज ओपन, अंदर कड़कती बिजली, ओहो लाइटनिंग. Too much. Just like मुझे गाना सुनने दो, खुदा को वास्ता है. No, but truly it was all I mean I'm going to blow my own trumpet, but it was all my content. आपने रिब केज निकाला हुआ है? नहीं, क्यों? To blow your own trumpet. Comedian तो है ना. Comment. Thank you so much, Khalid. It's a pleasure talking to you. Hopefully we'll see a lot more of each other now. इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा. Thank you so much everybody listening. Take care. Bye.